So I will take you through the all 9 criteria of NBA accreditation process. I hope everybody is there. So as yesterday, Professor who took the lecture, he told you that there are 9 criteria against which NBA evaluates. So I will go through all the 9 criteria against which the institutions are evaluated. Before I start, I want to tell you that there are different criteria, different performance to be filled. The performer called SAR, self-evaluation assessment report. SAR is self-assessment report. There are different performers to be filled at different levels. That means for diploma programs, there is a different performer, and allocation of marks is different, although the total number of marks is 1000 only for all the 9 criteria combined. For UG programs, that is for BE, BTech, the performer is different. Again, as I said yesterday, NBA has divided the institutions into Tier 1 and Tier 2 institutions. So there is a different performer, different SAR performer for Tier 1 institutions and separate accreditation performer, SAR performer for Tier 2 institutions. Similarly, for PG programs, for master's programs, again there are a set of 2 performers, one for Tier 1 and second for Tier 2. So if you go to NBA website, as I said, nba.ind.org, you will find all the performers, different performers, which were being used previously, and the current performers are available. The only thing is we have to fill the current performer, the performer which I will discuss today. As I said yesterday also, you need to have passed 2 batches minimum from your polytechnic in the same program. That means if you want to go for accreditation of mechanical engineering diploma program, you should have passed two programs. That means 2 batches should have passed from your institute. सर वो ट्राई अगेन है, उसको ना ट्राई अगेन कर दीजिए. हाँ जी सर, इसको 1-2-20 सेकंड के बाद तक कर दीजिए दोबारा ट्राई. अभी आ गया. ओके आ गया है. Okay, this is technology is not behaving. So there is a different performer, and we have to find the latest performer which is applicable, because if you fill the different old performer, it will not help. They will reject the performer. So I'll discuss the latest performer which is applicable from 1st January 2016, which you have to fill. As yesterday Amardev said, there are 9 criteria. In fact, there are 3 parts of the SAR. One is part A, which is called institutional information. This is only facts. That when the institute was started, how many staff members are there, who is the owner, what is the trust. So I'll go through that institutional performance afterwards. But more important is part B, which contains all the 9 criteria. You must be seeing on your board. Part C is only a single page declaration by the HOD, head of the institution, declaring that whatever information has been given is factually correct. If you see under part B, criteria summary, it is divided into 2 parts. If you go to see 8 and 9,
This is institute level criteria. That means irrespective of the programs you want to go in for accreditation, 8 and 9 will remain common. That means if you are filing for, let's say, 4 programs, if you want to apply for 4 programs, 8, 9 will remain common. Some of the things from the 1 and 7 should maybe also be common, but 8, 9 essentially has to be common for all the programs. Criteria 1 to 7. एक बार उसको ना F5 करके रिफ्रेश कीजिए सर, एक बार ना अपने F5 करके रिफ्रेश कर लीजिए स्क्रीन को। हाँ जी, yeah, display is okay. हाँ जी, ऐसे ठीक है सर। सर वो ना आपकी, हाँ सर, वो इंटरनेट स्पीड कम हो रही है ना आपकी, वो कट रहा है बार बार। हाँ जी सर, वो बाकी जगह से ना बंद करवा दीजिए वाईफाई और इसको डेडिकेटेड रखिए। So it's audible. So if you see, there are 3 parts in the SAR. Part A, institutional information. Part B is criteria summary. Part C is declaration by institution. Part C is only single page declaration that whatever you are writing in this report in the SAR, it is factually correct. Criteria B is basically the criteria against which you are judged, and again it has 2 parts. Criteria, there are 1 to 9, criteria number 1 to 9. So जो 8 और 9 हैं दोनों वो कॉमन है, irrespective of the program for which you are applying. 8 and 9 will be same. That means even if you are applying for 5 programs, 8 and 9 you have to fill once and copy into the all programs. Criteria 1 to 7 are program level. Again, I am stressing it is program level. It is not the department level. It is the program level. Program is the diploma program for which you want to apply for accreditation. So 1 to 7 are program level criteria, which we will discuss one by one. The total marks for this is 1000. If you see, vision, mission and program educational objectives is 50 points. Program curriculum and teaching learning process is 200 points. Very heavy weightage to criteria 2. Course outcomes and program outcomes 100 points. Students performance 200 points again. Faculty information and contributions, availability of faculty and their contribution 150 points. Facilities and technical support 100 points. We'll come to it one by one. Continuous improvement, that means how you have been improving over the last 3 years, 75 points. Student support system 50 points, and governance, institutional support and financial resources, budgeting, etc. is 75 points. The total makes 1000 points, and to get accredited for 5 years you need 750 or more points. Now these points, 1000 points, or points under each subhead criteria. Let's say criteria 2 is 200 points. It is not lump sum 200 points. It is again divided into small components, small parts, that what is covered under program curriculum and teaching learning process. So we will discuss what is covered and how do we go about it. One by one we will discuss, and how many points are allocated to each. As I said, to be accredited you need 750 points or more out of 1000, so 75%. But if you are not able to get 750 points,
if you get 600 points or more, you are provisionally accredited for 2 years. That means it is an indication that okay, whatever you are doing, it is in the right direction. ठीक डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, और थोड़ा सा और काम करके आप अगर 2 साल के अंदर फिर अप्लाई करोगे, you will get 5 years. Of course, it is not automatic. ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद आपको 5 साल की मिल जाएगी. उसमें फिर आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा और दोबारा टीम आएगी, दोबारा इंस्पेक्शन होगी, दोबारा विजिट होगी. इसको इंस्पेक्शन नहीं कहते हैं हम, इसको हम विजिट कहते हैं. दोबारा विजिट होगी टू सी दी actual facts about what you have filled in the SAR. Now let's say what are these criteria in detail. Let's go one by one. Criteria 1 is vision, mission and program educational objectives. 50 points total. It says 1.1. It is again divided. These 50 points are again divided into number of subcomponents. It says state the vision and mission of the department and the institute. Now let's see what is vision and mission. What is vision and mission? Vision and mission is basically, it is the overall first institute. What the institute wants to do. है ना, ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने पॉलिटेक्निक खोला था, वहां से अच्छी पैसे मिले उनको और उन्होंने भी दूसरे ने भी पॉलिटेक्निक खोल दिया. इट इज अज्यूम्ड, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट इसको अच्छी तरह से स्टडी करके, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट को देख के, इंडस्ट्रियल डिमांड को देख के हमने पॉलिटेक्निक खोला है. जो आपने प्रोग्राम्स दिए हैं, इसमें डिसाइड किया है कि हम मैकेनिकल में डिप्लोमा करेंगे, कंप्यूटर में डिप्लोमा करेंगे, ये लोगों को देख के नहीं हमने रखा, हम लोगों ने स्टडी करके शुरू किया है. वी हैव मेड सम स्टडी ऑन मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड विद द इंडस्ट्री, वी हैव डिस्कस्ड विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, एंड देन ओनली वी हैव स्टार्टेड. You see, we may have started a diploma program in mechanical engineering without actually thinking on these things, because हमने तो देखा कि वो साथ वाले पॉलिटेक्निक में हो रहा है, स्पेशली सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में कह रहा हूं कि वहां पे बहुत अच्छी एडमिशन हो रही है मैकेनिकल में, हम भी मैकेनिकल शुरू कर देते हैं. मैकेनिकल में हमारी अच्छी एडमिशन हो रही है तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करके मैकेनिकल में हमने 60 से 120 सीटें कर दी. ऐसा नहीं है. It has to be a systematic approach. It has to be analyzed, and then only we translate it into number of seats. So what is vision? Vision is basically the overall view, overall goal of the institute, what they want to do. It is not only that diploma institutions will have the vision, or only technical institutions will have the vision. State will have the vision, country has the vision. We often talk vision 2020, now we are talking about vision 2030. So vision statement typically indicates aspirations, what we want to do. We want to become a world-class diploma institutions for providing manpower to the industry, right? So that can be my vision. That is one of the vision statements I can make. You can have your own different vision statement. So vision statement typically indicates aspirations and mission statements and aspirations of the institute. What they want to do overall. This is a broader statement. कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों हमने डिप्लोमा कॉलेज खोला है, यहाँ पे क्यों पॉलिटेक्निक खोला हमने, हमारे जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो कैसे डिफरेंट होंगे. Some diploma programs, some polytechnics can say that I will produce diploma holders which will have an inclination towards research, or I can say that I will produce diploma holders who can go in for
higher studies. So bent of my diploma programs itself, जो हमने बनाया है प्रोग्राम, उसका यही होगा कि हम उनको हायर स्टडीज के लिए तैयार करेंगे. और व्हाट वी से कि हम उनको तैयार करेंगे वर्ल्ड ऑफ वर्क के लिए, सो दैट दे कैन रेडिली फिट इनटू द वर्ल्ड ऑफ वर्क. So I say that I want to produce excellent diploma holders from my institute. So that can be my vision statement. There are some catchy words. People say, I want to make my institute world class. Now that world class is not known. What is that? Anyway, you can write catchy words. You can say that we want to be the best polytechnic in the country. Right? Vision statements are long-term statements. It may not be measurable easily. ऐसा नहीं कि हम जल्दी-जल्दी इसको measure कर लेंगे या change कर देंगे. So vision statement indicates what you want your institute to be, what you want your students to be, what you want to be. Whereas the mission statements give how will you achieve that vision. हमने बोल तो दिया कि हम इसको बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास डिप्लोमा और नंबर 1 डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं in the country. Now what we will do for that? That will come under the mission. उसको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मिशन स्टेटमेंट हमारी क्या होंगी? हम क्या करेंगे उसके लिए? We will provide excellent facilities in terms of teaching learning. बढ़िया फैकल्टी लगाएंगे, बढ़िया लैब्स बनाएंगे, अच्छे प्रोजेक्ट कराएंगे बच्चों से, इंडस्ट्री के साथ हम कोलैबोरेट करेंगे. So that can be my mission statements. कि अपने विजन को अचीव करने के लिए हम क्या क्या करेंगे? That will come under the mission statement. So I hope this vision and mission concept is clear, that you will have a vision and mission concept at the institute level as well as at the department level. जब हमने विजन एंड मिशन इंस्टीट्यूट लेवल पे डिफाइन कर दिया, जब हमने लिख दिया विजन एंड मिशन, और विजन एंड मिशन इज नॉट रिटन बाय वन पर्सन. ऐसा नहीं है कि एक आदमी बैठा उसने विजन एंड मिशन बना दिया, एक आपने कंसल्टेंट लगाया और उसने विजन और मिशन जो लिखा हमने एक्सेप्ट कर लिया. विजन एंड मिशन शुड बी रिटन विद द हेल्प ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. लेट अस से हु आर द स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस. क्या क्या है स्टेक होल्डर्स हैं? हु इज इट स्टेक होल्डर? मेरे हिसाब से जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके इंस्टीट्यूट में, वो हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज देयर कैरियर which is being made. It is their career which is at stake. They are the biggest stakeholders. Your employment agencies, industry, those who have to use these students, where the students should contribute what they need. उनको क्या चाहिए? They are the stakeholders. Your institute as a whole, management of the institute is a stakeholder. Faculty of the institute is a stakeholder, because if the institute is doing good, if the program is doing good, if the students in the program are doing good, it is good for the faculty also. Because the faculty is there if students are there. If there are no students in the institute, there is no need of faculty. Who else? Parents are the stakeholders. It is their money, it is their words who are studying in the program. So they are the stakeholders.
government, state government, central government, they are the stakeholders because the economy of the state depends on the technical manpower you are producing. So we have to identify the stakeholders in the program. Who are the stakeholders who are affected by this? Who will be using this? Who will be the employers for this? So they should be consulted, and vision should be made accordingly. Vision and mission should be written accordingly. Then what it says? Vision statement typically indicates aspirations, and mission statement states the broad approach to achieve the aspirations. I hope I am clear till now. Vision and mission statement should be written in simple language so that it is understandable, easy to communicate, and should define objectives which are out of reach in the present context. Should be understood and shared by the people within the system. ऐसी विजन और मिशन लिखने का कोई फायदा नहीं जिस लोगों को समझ नहीं आ रही. सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, और सीधी टारगेट होनी चाहिए कि हमने ये करना है, हम ये करेंगे. Department vision. Then once you have written the institute mission and vision, we have to draw department mission and vision. Department vision and mission, and department vision and mission should be such that it helps in attainment of the institute vision and mission. ऐसा नहीं हो सकता कि इंस्टीट्यूट की विजन एंड मिशन कुछ और है और डिपार्टमेंट की डिफरेंट हो गई है. Department vision and mission should help in attaining the vision and mission of the institute. Now there are 5 marks for this total. Vision and mission of the department and the institute. Basically here more emphasis is on the department because otherwise it is drawn from the institute, but here we are more concerned about the vision and mission of the department. And it says, now this जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो, अवेलेबिलिटी, अप्रोप्रिएटनेस एंड कंसिस्टेंसी, ये एनबीए ने ही डिवाइड किए, मैंने डिवाइड नहीं किए. 5 मार्क्स 50 में से 1.1 को 5 मिले, और उसमें से फिर अवेलेबिलिटी ऑफ विजन एंड मिशन उसका सिर्फ एक है. दैट मीन्स ओनली 25% मार्क्स आउट ऑफ 5, 20% मार्क्स. इसका मतलब ये होगा कि जस्ट राइटिंग द विजन एंड मिशन डजंट हेल्प. अगर अवेलेबिलिटी है कि ठीक है आपने कुछ भी लिख दिया, इसका मतलब उसको 1 मार्क मिला आउट ऑफ 5, 20% ओनली. और अप्रोप्रिएटनेस, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मतलब टू द प्रोग्राम. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो आप अचीव कर सकते हो, जो आपके पास फैसिलिटीज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके साथ भी ये मैच करनी चाहिए. So there are 5 points for this. Very important aspect. This is again a statement. State the program educational objectives, PEOs they call. 5 points of the program seeking accreditation. Now this is very specific to the program for which you are applying for accreditation. What is PEO? PEO is basically the statement saying that what your students will be up to after passing the program. पहले PEO हम कहते थे just after passing the program. Now people say, now NBA has changed. They say after 3-4 years of passing the programs, because immediately after passing the programs students are not exposed to that extent. 4-5 साल पास होने के बाद क्या होगा आपका, कहां पे होंगे आपके स्टूडेंट्स, क्या क्या काम कर सकेंगे. So PEO statements are those.
उसमें क्या 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 आना चाहिए कि typically under the following 5 broad categories that your program will prepare the students for employment and or higher studies. Higher studies is a bigger area. It is not immediately that after passing the diploma students will go for higher studies. Idea is that they should have been given the background that they can go for higher studies maybe immediately after diploma or after 2-3 years. They can go to world of work, they can work for the 2-3 years, 4 years, 5 years, and again come back to the institute of higher learning. Core competence कि क्या डिसिप्लिनल नॉलेज होगी, क्या हमारा जेनरिक डिप्लोमा होल्डर होगा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्या उसको हम थर्मल एरिया में ही ज्यादा करेंगे, क्या उसको हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार करेंगे, क्या हम उसको R&D की तरफ चलेंगे, क्या हमको IT स्किल्स दे रहे हैं उसको. ब्रेड्थ, it is written as T-shaped engineer. That means it should not be I-shaped engineer. It should be a T-shaped. ऊपर ग्रो करके he should be able to move to the other functions. थोड़ा सा मल्टीडिसिप्लिनरी होना चाहिए, थोड़ी सी फाइनेंस की भी उसको नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी उसको HR की भी नॉलेज होनी चाहिए. प्रोफेशनलिज्म, of course they have to be professional in their career. Lifelong learning, this is very important because we may not be teaching everything to the students during these 2-3 years for which they are available in the institute. They have to be given the lifelong learning exposure, that they can learn themselves, self-learning. Environment, that means concern about environment. Life learning environment, if you say this, that means how, where and the knowledge is available. What are the places from where they can get the information? What are the sources of information? How should they go about it? How they can get the correct information? How to validate the information? So all this is to be covered in the PEOs. I'll give you some PEOs also after this. Let me go through it. There are 10 points for, you see, you have defined the vision and mission. You have defined the PEOs. But where are you putting these? Students को कैसे पता चलेगा? आपके stakeholders को कैसे पता चलेगा? Teachers को कैसे पता चलेगा कि क्या हमारी विजन एंड मिशन है? आते जाते वो देखेंगे कि हमारी विजन एंड मिशन ये है, तो they will try to achieve it also. They will know also where they have to go. So we have to disseminate it. We have to publish and disseminate. Disseminate कैसे करेंगे? वेबसाइट पे लिखेंगे अपने, करिकुलम डॉक्यूमेंट में डालेंगे. We can have some posters, नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे. स्टूडेंट्स को क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे जब जैसे क्लास शुरू होती है फर्स्ट डे पे, फर्स्ट डे ऑफ द सेशन. It can be part of the stationery which they are getting, so that they are continuously reminded of what they have to do. What they have to do. So describe where the vision, mission and PEOs are published. This is what we have to write in the SAR. Detail the process which ensures awareness among internal and external stakeholders with effective process implementation. As I said, the vision, mission and PEOs have to be developed after discussing with the stakeholders.
Internal stakeholder may include management, governing body members, faculty, etc. And external stakeholders may include employers, industry, alumni, and funding agencies, etc. So this is the marking scheme again. That it should be, you have to write. Under point 1.3, you have to write where you are publishing and how you are disseminating the vision, mission, and PEOs. Then adequacy, process, and extent of awareness. Extent of awareness is, that means when the team comes to your college, they can ask the students, they can ask the faculty, they can ask the, because there will be a parent meeting also during the visit. There will be a meeting with this visiting team will interact with the industry also, employer also. They can ask them, how are they involved in this? Are they aware about this? Are the students aware about this? So here then it is written where what are the places you should have vision and mission available. Availability on institute website under relevant program link. Availability at department notice boards, HOD chamber, department website, availability in department level documents, and there should be documentary evidence that you are disseminating it. State the process for defining the vision and mission of the department and PEOs of the program. There are 15 marks out of 50, that means 30% weightage has gone to 1.4. That means how you have defined. You see, NBA document, when you fill this SAR, one thing you have to write, that whatever, one thing you have to keep in mind, that whatever you are writing in this SAR, you should have, whatever you are claiming, you say that my 80% students are employed through campus interviews. You should have a document. You should have a document. When you say that, okay, we have developed the vision and mission statements of the department by the involvement of the stakeholders, you should have a document to prove it. You should have a document to show it to the visiting committee, because visiting committee has every right to it. It is their duty actually. It is not their right only. It is their duty to see the documents for each point and each subhead. So you have to say how you have defined the vision and mission, how many meetings were there, and it is just not writing that, okay, we had 5 meetings. You should have a documentary proof that, okay, a meeting was called on such and such date, this was discussed, and this is the outcome. And you have an attendance sheet with that these are the persons who attended it. Right? Similarly, implementation. How you have implemented it, that will be visible. You have the vision and mission on the notice board. You have it on the website. You have it in the department corridors. Students are told about the vision and mission, because that can be checked. That will be counter-checked by the team. They will discuss with the students. Now, very important. We have written vision and mission of the department. We have written PEOs. In fact, PEOs are derived from the vision and mission. Let's say we write 2, 3 या 4 PEOs, 4-5 हमने PEO मिले लिखे कि मेरे स्टूडेंट्स ये होंगे, मेरे स्टूडेंट ये करेंगे, मेरे स्टूडेंट 5 साल बाद मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे. Now, how that PEO 1, 2, 3, 4, they are mapping with the mission statements. How they are contributing towards the mission statements, or how mission statements are helping in the PEOs. In fact, PEOs should contribute towards the attainment of mission statement. Then here what he says is that you have to map the PEO statements with mission statements, and if there is
some correlation, you write 1. That means let's say PEO1, you write the statement here and write 1 under M1. That means PEO1 and M1 are slightly correlating. Or you write PEO2 and M1, write 3 under that. You write that their correlation is very high. The idea here is that you have written, let's say, 5 mission statements and 5 PEOs, or let's say 4 PEOs, 6 or 5 mission statements. Each PEO should contribute towards the attainment of at least 1 mission statement, but each PEO can contribute to more than 1 mission statement. So you have to do mapping here. So that was as far as the criteria 1 is concerned, that is vision, mission and PEOs. There were 50 points. If you see, if you are thinking of going in for accreditation, you can score very high points in this, because it is the only paperwork you have done here, and you should have written all these statements, you should have disseminated, you should have displayed all this, and you should have discussed it with the stakeholder. The process, the idea is that whatever we are producing, if you are producing a diploma engineer, what we will do that with that? We will not keep them in the institute. We have to make them employable. The persons who will provide them employability, those persons, the industries who will employ them, they have to be kept involved in the process. So idea is that only. Now criteria 2 is program, curriculum and teaching learning process. Very heavy weightage to this, 200 points. That means 20% of the total marks are given to criteria 2. 50 points, first 50 points is for program curriculum. Now if you will see this program curriculum part, it doesn't talk about the quality of the what is written in the curriculum. Of course, quality will be seen by the evaluating team, visiting team, but idea here is because the diploma institutions do not make curriculum. Diploma institutions are given the curriculum by the state boards of technical education and they have to implement it. And many times the program curriculum may have not been revised for a long period. Now, what is the fault of the institute, of the polytechnic, if the program has not been revised? So the marks are allocated not for the program curriculum, but extent of compliance of the board curriculum. How much you are working toward the attainment of, for the compliance as defined by the board, and not only compliance, going beyond the syllabus. Why should a diploma program, why should an institute go beyond the syllabus? Let's say diploma program has not been, this curriculum has not been revised for the last 5 years. Industry wants that you teach CNC machines to mechanical engineers. And you find that it is not there in your syllabus. Now one part is that you say it is not a part of the syllabus, so you will not talk about CNC machines at all. हम तो इसी बात नहीं करते, हमने जो डिप्लोमा में लिखा हुआ वो करा दिया जो करिकुलम में लिखा है। बट उससे क्या हुआ? इंडस्ट्री तो कहती है हमें सीएनसी मशीन के बच्चे चाहिए, जो आप पढ़ा रहे हो हमें नहीं चाहिए, और जो आप पढ़ा रहे हो वो हमें डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो हमें तो आपके बच्चों को बहुत फिर ट्रेन करना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि नहीं,
आप हमारे क्लाइंट हो, इंडस्ट्री हमारी क्लाइंट है जो उनको एम्प्लॉयमेंट देगी हमारे बच्चों को, तो हम वही करेंगे जो आप चाहते हो। एट द सेम टाइम हमें अपना बोर्ड को भी कंप्लायंस करनी है। What we say that okay, we will teach as per board curriculum and we will go beyond syllabus also. हम बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ाएंगे सीएनसी मशीन पे, बट बच्चों को 2-4 लेक्चर करवा के बाहर से एक्सपर्ट बुलाएंगे, अगर हमारे पास एक्सपर्टाइज नहीं है उनको हम उससे अवेयर करवाएंगे, so that students know what a CNC machine is. कंप्यूटर साइंस में इंडस्ट्री वांट्स के हम तो बिग डाटा पे काम करेंगे, इंडस्ट्री वांट्स दैट वी विल टीच क्लाउड कंप्यूटिंग, वी नीड क्लाउड कंप्यूटिंग, बट क्लाउड कंप्यूटिंग तो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं उनको हम छोड़ दें ऐसे ही कि क्लाउड कंप्यूटिंग तो आपके सिलेबस में नहीं थी इसलिए वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। वी मे हैव एक्सपर्टाइज इन द इंस्टीट्यूट और वी मे नॉट हैव एक्सपर्टाइज इन द इंस्टीट्यूट, बट since the industry wants and industry can provide employment to these people who know cloud computing, so why should I not go for cloud computing? 1-2 लेक्चर हम करवाएं, इंडस्ट्री से बुलवा लें लोगों को, आपके सप्लायर्स हैं उनसे बुलवा लें, उनके पास नॉलेज है। So what it says is state the process used to identify extent of compliance of the board curriculum for attaining the program outcomes and program specific outcomes. Program outcomes I will discuss. It says and also mention the identified curriculum gaps if any. That means what are the curriculum gaps now? Curriculum gaps वही है जो मैं बात कर रहा था कि सीएनसी मशीन पढ़ानी है, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाना है, न्यू मटेरियल्स इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर मेकिंग रोड्स पढ़ाना है। कहते हम कैसे, then in the blue it is state the process details to identify gaps and mention identified curricular gaps. It will include typically relevance of curriculum, frequency and process of revision, weightage to theory, lab, tutorial and coverage of curriculum. Many of the parts, let's say weightage to theory, lab and tutorial, that will be given by the State Board of Technical Education itself in the document. But what we want is that हम लोगों ने तो वर्कशॉप्स की, हम लोगों ने इंडस्ट्री से बात की और इंडस्ट्री ने हमने ये गैप आइडेंटिफाई किया। कहां से गैप आएगा? आप इंडस्ट्री से बात करोगे, आप स्टूडेंट से बात करोगे। When I say industry doesn't mean industry only, it is basically all एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग एजेंसीज। आप अपने अलुमनी से बात करोगे जो आपके पास आउट्स हैं, उनसे पूछोगे कि भैया आपको क्या लगता है कि अगर हमने आपको क्या कमी महसूस हुई जाके इंडस्ट्री में इमीडिएटली आफ्टर पासिंग, क्या ऐसा लगा आपको कि अगर हमें ये पढ़ाया होता हमारी जॉब बढ़िया लगती, हमें अच्छी सैलरी मिलती, हम ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते, जो वहां जाके सीखना पड़ा। क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? क्योंकि अलुमनी को पता आपने क्या पढ़ाया और अलुमनी को यह भी पता उनको क्या चाहिए था आगे जाके। इफ यू कैन डू सम feedback taking exercise from the alumni, not only immediately after passing, maybe after 2-3 years. For that you have to have a network. आजकल तो बहुत आसान है, ईमेल पे कर लीजिए। पहले मुश्किल था, चिट्ठियां डालनी पड़ती थी, एड्रेस नहीं होते थे, एड्रेस चेंज होते थे, लोगों को फिजिकल एड्रेस तो चेंज हो जाते हैं बट ईमेल एड्रेस लोगों के साथ चलता है जहां पे मर्जी चले जाएं। सो ईमेल से आपको उनसे कांटेक्ट रखोगे और उनसे करिकुलम गैप्स की बात करेंगे, क्या क्या कवर करना चाहिए, किस एरिया में स्कोप है जहां पे बच्चों को नौकरी मिलेगी, क्या पढ़ाना चाहिए एडिशनल। सो दिस करिकुलम पार्ट, this talks about 50 marks, will continue 2.11. As I said, content beyond syllabus. What have you done to cover the gaps? Provide details of additional course, learning material, content,
lab experiments, projects, etc., arising from the gaps identified in 2.11. The delivery details and relevance are to PEOs and PSOs for each of the assessment year in the format given below. If you see, this is CAY, CAY M1, CAY M2. These are typical terminology terms which NBA uses. CAY is current academic year. That means the current academic year which is going on. CAY M1 is current academic year -1. That means पिछला साल. CAY M2 is पिछले से पिछला साल. Current academic year -2. What it says, what was the gap identified here? If you see the table below, what are the gap identified and what action you have taken? बच्चों को CNC मशीन नहीं पता था क्या, क्योंकि मेरे पॉलिटेक्निक में नहीं है, महंगी है मशीन है, तो हमने क्या किया? तो वी वांटेड टू गैप क्या था कि CNC मशीन पे एक्सपोजर नहीं था. एक्शन टेकन क्या है? एक्शन टेकन में 1 or 2 actions can be there, more than 2 can be there. क्या एक्शन टेकन है कि हम लोगों ने एक इंडस्ट्रियल विजिट की जहां पे हम पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को लेके गए, जहां पे हमने उनको CNC मशीन दिखाई कैसे काम करती है. एक्शन टेकन के अंदर क्या था कि हमने इंडस्ट्री से आदमी बुलाया या किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन से आदमी बुलाया जो CNC मशीन पढ़ाता है, जिसको आती है, और उसे हमने लेक्चर करवाया उनको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल मशीन एंड CNC मशीन. डेट, मंथ एंड ईयर कब किया था, रिसोर्स पर्सन विद डेजिग्नेशन, number of students present, and relevance to PEOs and PSOs. PSOs are program specific objectives. I'll come to it that POs, program objectives, are defined by NBA itself, जो पीछे lecture 1 दिखा रहा था पहले वाले पे. So we have to see why we should do it. I want my students to be industry ready. तो industry ready होने के लिए हमने क्या किया? एक लेक्चर करवाया, 2 लेक्चर करवाए, इंडस्ट्रियल विजिट करवाई. उससे मेरा क्या था, मुझे लगता है कि मेरा वो करिकुलम गैप था वो कवर हो गया. मैंने बियॉन्ड सिलेबस कंटेंट करवा दिया उनको, बच्चों को, which will help it my students into getting employment. Next is teaching learning process. As I said earlier also, whatever we claim here in the performa, we have to have documentary evidence. अगर हमने कहा कि अगर if we go back, अगर हमने कहा कि हमने उनके लिए लेक्चर करवाया, पिछले साल करवाया, उससे पिछले साल में करवाया, इस साल में करवाया, we should have a documentary proof. Documentary proof क्या होगा कि हमने उनको एक लेटर लिखा, उनकी कंफर्मेशन आई. कोई जरूरी नहीं का लेटर आपके पास हो, ईमेल भी हो सकती है. आजकल तो ईमेल से चलता है सारा काम. उनको लेटर लिखा, उनकी कंफर्मेशन मिली, जिन्होंने बुलाया, जिसने आपने बुलाया उसने एक्सेप्टेंस दिया. उसके बाद कितने बच्चों ने अटेंड किया, उसकी अटेंडेंस शीट बना सकते हो आप. उसमें थोड़ा सा एक डिटेल नोट लगा सकते हो कि ये कवर हुआ, सो दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट. कल बंदा जो डील कर रहा है वो चेंज हो गया, वो रिकॉर्ड रहना चाहिए. डिस्क्राइब प्रोसेस फॉलो टू इंश्योर इंप्रूव क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. Process may include adherence to academic calendar and improving instruction methods using pedagogical initiatives such as real life examples. कि हम तो इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करते हैं, हम रियल लाइफ एग्जांपल से बात करते हैं. मैं आपको नॉर्मली एक एग्जांपल देता हूं. हम कपड़े धोते हैं, कपड़े सुखाते भी थे, पहले स्क्वीज करते थे, निचोड़ते थे उनको, उसमें बहुत सारी एफर्ट लगती थी, टाइम लगता था, सूखने में भी टाइम लगता था. अब हमने एक छोटा सा देखा कि हमारे पास एक प्रिंसिपल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का प्रिंसिपल है. तो बेस्ड ऑन दैट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, somebody has come out with the
ड्रायर, इलेक्ट्रिकल ड्रायर। अगर हम बच्चों को वो सिखा देंगे, वो दिखा देंगे, मुझे लगता है बच्चा नहीं भूलेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, कहां पे काम होती है, एंड व्हाई शुड ही स्टडी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई वॉज जस्ट थिंकिंग वन डे कि क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। एक मेरे मुझे बैठे बैठे मिली कि एक नेल कटर की एग्जाम्पल आप देखिए। अगर हम लीवर का प्रिंसिपल बताते हैं, फोर्स एंड एफर्ट का प्रिंसिपल बताते हैं, तो नेल कटर जैसा एग्जाम्पल दीजिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग, क्या कर रहे हैं हम, किसी को बाहर से बुला रहे हैं या सिर्फ अपनी फैकल्टी कर रही है। Quality of laboratory experience with regard to conducting experiments. Now just see, it is talking about quality of lab experience. That means what type of experiments you have. Now I can have a very easy way out. Excuse हो सकता है कि मैं तो वही experiment कराता हूं जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने लिख के दिए हैं मुझे। Agreed, हम वही एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, हम वही एक्सपेरिमेंट करवाएंगे जो मेरी, वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसको करवाने के लिए मेरे पास लैब कैसी है, उसको करवाने के लिए मेरे पास कितनी कितनी लैब सेटअप्स हैं, मुझे ओम्स लॉ वेरीफाई करना, कितनी सेटअप है, कितने लोग काम कर रहे हैं एक बार मेरे पास, कितने बच्चों का ग्रुप काम करेगा एक सेटअप पे। रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस ऑफ डाटा। आप देखोगे बुकलेट्स उठा के बच्चों की प्रैक्टिकल नोटबुक्स, सबका एक ही डाटा होता है। अगर किसी ने एक गलती की हुई है, दूसरे में भी गलती है, दैट मीन्स इट शोज दैट it has been copied. They have not performed the experiments. So that also is counter checked by the committee which visits your department or the program. Analysis of data. Are the students able to analyze the data? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। I went for NBA accreditation visit सोम कॉलेज, तो एक बच्चा ग्राफ बना रहा है फिजिक्स की लैब में, रीडिंग ले रहा है। मैं कहा ये क्या कर रहे हो आप? कहता जी सर ग्राफ बना रहा हूं। काहे में ग्राफ बना रहे हो? सर ये वेरिएबल है। मैंने उसको पूछा ग्राफ क्यों बना रहे हो? अच्छा बताओ आप, आपके पास तो रीडिंग है, टेबल है बहुत बढ़िया, रीडिंग लेके टेबल बनाया, उससे फिर आप ग्राफ बनाना शुरू कर दिया। The student doesn't know why he is making it, why he should make it. हमने कभी बताया ही नहीं है। एक मैं आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का और एक तरीका एग्जांपल बताता हूं जो मैं अक्सर कोट करता हूं। हम सभी लोग सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी लोग मिलके ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं। हम स्टूडेंट्स को कहते हैं दैट ओके V इज इक्वल टू IR, इसको वेरीफाई करना है हमने, एंड वी प्रोवाइड हिम ऑल द डाटा। आजकल तो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज वालों ने क्या क्या बुकलेट बना दी, टाइप्ड है, सारा कुछ है, और उसमें लिख दिया कि ये इंस्ट्रूमेंट लो, एक आपको वोल्ट मीटर लेना है, एक एम मीटर लेना है, एक पावर सोर्स लेना है, और एक आपको रेजिस्टेंस लेनी है। आप हमको उसको बताते हैं कि वोल्ट मीटर को कभी आपने सीरीज में नहीं लगाना, इसको पैरेलल में लगाना है, और एम मीटर को सीरीज में लगाना है, और वाइस वर्सा, व्हाटएवर यू डू। और उसको बेचारे को बोलते हैं हम बच्चे को, आप ऐसे कनेक्शन कर दो, ये रीडिंग ले लो, और दैट इज ऑल। V इज इक्वल टू IR आपने कांस्टेंट करके उसको दिखा दिया, और बच्चे ने देखा या रीडिंग पिछली कॉपी से, पिछले साल वाली कॉपी से कॉपी की और आपको दे दी। मैं कहता हूं व्हाई डोंट वी चेंज दिस, व्हाई डोंट वी चेंज दिस। हम उसको कहते हैं कि भैया आपको ओम्स लॉ वेरीफाई करना है, आप बताओ क्या क्या चाहिए उसमें, पहले तो बताओ ओम्स लॉ होता क्या है, और उसको अगर वेरीफाई करना है इसका क्या मतलब है।
कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं इसमें जो इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर उसने एक एक्सपेरिमेंट भी अच्छी तरह से कर लिया, उसको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड व्हेन ही ड्रॉज द ग्राफ फॉर दिस, ही विल नो व्हाट ही इज डूइंग। इसको हम एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो एनालिसिस ऑफ डाटा, recording of observations, charting, encouraging bright students. All students are not equal in the class. So what are you doing to encourage the bright students? उनको फास्ट पेस पे काम करने देते हैं कि ठीक है भाई। एक प्रॉब्लम मैंने देखी और करिकुलम में, बेसिकली मोर इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वहां पे लिखा है एक सब्जेक्ट के 15 एक्सपेरिमेंट लिख दिया सब्जेक्ट के पीछे, और उसके साथ एक नोट लगा दिया, मिनिमम 7 to be done. When you go to the lab, वो सारे 15 के 15 है तो सब्जेक्ट के ही एक्सपेरिमेंट जो आप थ्योरी में पढ़ा रहे हो, बट पीछे लिख देगा मिनिमम 7 to be done. Now teacher also says कि सर बोर्ड ने तो लिखा है 7 to be done, यूनिवर्सिटी ने लिखा है 7 to be done, so we are doing 7. Whereas the other experiments you are not touching. क्यों नहीं टच कर रहे? क्योंकि हमें तो 7 करने को बोला है, 7 तो मिनिमम बोला है, you should go beyond that. Assisting weak students. Now this is for theory as well as practical. क्या कर रहे हो आप? Assisting weak students. बहुत सारी जगह से कंप्लेंट होती है कि सर हमारी तो जो इनटेक है वही बहुत खराब है, हमारे बच्चे जो इनटेक लेते हैं ना पॉलिटेक्निक में जो आते हैं हमारे पास, वो बहुत गंदे बच्चे आते हैं, उनको कुछ नहीं आता, नाम नहीं लिखना आता। तो मैं कहता हूं कि देखो ये आपकी बिल्कुल ठीक है कि बच्चे वीक आ रहे हैं आपके पास, बट एक बार आपने उनको ले लिया पॉलिटेक्निक में, देन इट इज आवर ड्यूटी कि वो भी अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डिप्लोमा होल्डर बन के आपसे निकले, आपके पॉलिटेक्निक से पास आउट हो। या तो आप लेना बंद करो उनको, बट वो भी हम नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों को पकड़ पकड़ के लाते हैं। कब से डिस्कनेक्ट हो गया? अभी हुआ, फिर तो ठीक है। चाय वाय नहीं आती यहाँ पे? सर आती है। आती? सर ऊपर तुलसी मैम का हो रहा है ना कोर्स। हेलो, हाँ जी सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी, थैंक यू। उस साइड से डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या? हाँ जी सर, उन्होंने इंटरनेट बहुत स्लो है, कल भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा फिर। मैंने लगा जिथे आप चलाना उथे एक डोंगल भी दिया करिए, और 1500 रुपए खर्च दिया करिए, कुछ नहीं होता। कल तो शायद सर उन्होंने डोंगल भी रखा से एक्स्ट्रा। अच्छा, सर जिन्हें ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰਸਨ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ, तेरे 2 तारीख ਨੂੰ ਆਉਂਗੇ सर। लड़ना है को लड़ना है करती नहीं यार, हम तो नहीं मंगाया। चाय बुला दो, चला बुला था।
ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। कल तो उन्होंने सर लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚੇ ਪੀ ਗਏ। हेलो हेलो हाँ जी सर डिस्कनेक्ट हो गया सर। हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ सर बाहर होने का ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। हाँ हाँ पंकज। अच्छा हाँ अच्छा कल करवा लेंगे। अच्छा कितना है टोटल पैसे कितने पड़े हैं? अच्छा मैं तो अभी क्लास में हूँ ना, फिर कोई बात नहीं, कल परसों कर देंगे। कब होना है मेच्योर, अपनी एफडी कब होनी चाहिए मेच्योर?
हाँ 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 संक्रांत है वो सब किया ना कंप्लीट डेटा कार्ड सब कनेक्ट किया Okay, welcome back again. Sorry, this was a disconnection at your end. Maybe internet is not behaving. So it is teaching learning process is 150 marks, which we have discussed. So we'll go through it quickly. If you see at the bottom, it is academic calendar 3 points. It is a distribution of 25 points under 2.2.1. Academic calendar 3 points. Pedagogical initiatives 3 points. Weak student initiative and bright students initiative 4 points. Classroom teaching, how you are doing. Are you only have blackboard or you have projector etc. also? Are your teachers using ICT, that means integration embedded system, that means you have videos in your lectures and all? Quality of experiments. Continuous assessment in the lab, that means are you improving the labs? Have you added some experiments, new setups in the labs? Student feedback of teaching, learning and action taken thereof. That means you see that's one very important thing which we have to do is take feedback from the students. We have to take feedback from all stakeholders actually, from industry, from parents, from alumni, from students. Now take students from the feedback. I have been in many visits. I have seen that people take feedback. They have very good volume, बहुत बड़ा ढेर लगाया हुआ feedback बना के लेके, but उसका analysis नहीं करते. Because idea is not to take the feedback only. Idea is not to create that feedback papers. Idea is that we should take the feedback and we should analyze the feedback if there is something wrong somewhere. अगर आपको लग रहा है कि किसी एक टीचर के स्टूडेंट्स बहुत फेल हो रहे हैं, उस पर कुछ एक्शन लीजिए. एक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि टीचर को निकाल दो. मे बी उस टीचर का वो सब्जेक्ट नहीं है, आप उसी को वो सब्जेक्ट दे दिया आपने, वो फेल हो गया, उसका सब्जेक्ट चेंज करिए. सब्जेक्ट नहीं चेंज किया तो हम उसको ट्रेनिंग पे भेज दें, उसकी ट्रेनिंग करवा दें. सो उसकी टीचर की काउंसलिंग कर दी. सो टेक एक्शन ऑन दैट. Take feedback from the students, analyze that feedback and take action on that. And that should be documented. Now, if you see this bottom lines, it has action taken thereof, students' feedback and action taken thereof is 6 marks. You will be saying that out of 1000, what is 6 marks? Every single point counts in this NBA accreditation. So, you should try to take maximum marks wherever possible. Initiative to improve the quality of semester tests and assignments. That means one examination we are doing at the end of the semester. That probably that quality is not in your hand. That is set by the board. But what we can do is we can improve the quality of sessional tests, assignments. Many people are not giving assignments at all. But assignments are to check the learning of the students, whether they have understood it or not. Giving assignments, just copying from the book and giving it to the student doesn't help. Giving assignments, making in semester tests needs a lot of effort from the teacher who makes the question paper, who checks the question paper, who gives the assignments. So it says mention the initiatives
implementation details related to quality assurance of semester tests and assignments that encourage and empower the students to develop skills and higher order of learning. What have we done? First is we have written program educational objectives and program outcomes. Outcomes will come now, we will discuss. But क्वेश्चन पेपर का स्टाइल तो हमने चेंज नहीं किया. क्वेश्चन पेपर व्हाट एनबीए वांट्स इज कि हमने लिखा कि माय स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज मैथमेटिक्स इन सॉल्विंग द mechanical engineering problems. I am a mechanical engineer, so every time I am talking about mechanical engineers. One of the objectives of my program is PEO is that मेरे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. When I see this syllabus, उसमें मैथमेटिक्स का एक ही सब्जेक्ट है जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दिया, उसके बाद मैथमेटिक्स ही नहीं आया. जो मेरा असाइनमेंट्स है उसमें मैंने कभी मैथमेटिक्स की बात ही नहीं की. जो मैं क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा हूं उसमें मैंने मैथमेटिक्स की बात ही नहीं की, ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं दी. तो हाउ डू आई रिलेट इट, हाउ डू आई मैप द क्वेश्चन पेपर टू द ऑब्जेक्टिव्स. अगर मैं चाहता हूं कि मैथमेटिक्स जो है माय स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स जो कैपेबिलिटी है मैथमेटिक्स में वो इंक्रीज हो, इंप्रूव हो, तो आई शुड इंट्रोड्यूस समथिंग to develop those skills, mathematical skills, as well as to test those skills. 2.2.3 is quality of experiments. जो आप एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो वो कितने के रेलेवेंट हैं जो आप बच्चों को बनाना चाहते हो उसमें. नो, आप तो कहेंगे, मैं भी कहूंगा कि हम तो बोर्ड के हिसाब से चला रहे हैं, जो बोर्ड ने लिखा हमने करा दिया. और बोर्ड ने तो जो लिखा बोर्ड्स भी अपने आप इंप्रूव करेंगे. तो एक नया वर्ड है इसमें, आउटकम्स आ गया है 2.2.3 में. आउटकम मीन्स व्हाट वी वांट द स्टूडेंट्स टू लर्न, व्हाट वी वांट द स्टूडेंट्स टू बी एबल टू परफॉर्म आफ्टर गोइंग थ्रू द डिप्लोमा. So how are the experiments relevant to that? Two point 2.4 quality of students projects and report writing. So the project work plays a very major role in the learning. हम लोग क्या करते हैं, हमने भी देखा कि हम इंडिविजुअल कंपोनेंट तो बना लेते हैं, बट जब हमें असेंबल करना है, उसको एक प्रोजेक्ट में लगाना है, एक प्रोडक्ट में बनाना है, हमने उसको बता दिया लीवर कैसे डिजाइन करना है, बट जब उसको एक प्रोडक्ट में लगाना वो हमें नहीं आता. वो जो बारी आती है वो हमारे प्रोजेक्ट में आती है. सो प्रोजेक्ट शुड बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस. जो टीम आपके पास आती है वो एनबीए टीम की बात कर रहा हूं, वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी देखती है कि प्रोजेक्ट कैसे बना रहे हैं बच्चे, कितने उसकी जो 3 साल की इंजीनियरिंग है उसमें यूज हुई है, उसका जो प्रोजेक्ट है उसके रेलेवेंट है कि नहीं है, और रिपोर्ट राइटिंग कैसे है. कैसी रिपोर्ट लिख रहे हैं बच्चे. आजकल बहुत प्रॉब्लम है, इंग्लिश राइटिंग की बहुत प्रॉब्लम है, बट वी कैन नॉट एस्केप, वी हैव टू डू इट इन इंग्लिश. हम लोग करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, मैं भी आपसे बात कर रहा हूं हिंदी में. बट द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी गुड. पीपल शुड नो हाउ टू राइट द प्रोजेक्ट, हाउ टू राइट द रिपोर्ट, हाउ टू प्रेजेंट. प्रेजेंटेशन मैटर्स. आप जितना मर्जी काम कर लो बढ़िया, अगर if you are not able to present it, it doesn't get you the required credit. So student projects की क्वालिटी को इंप्रूव करिए, उनकी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करिए, कैसे वो रिपोर्ट लिखते हैं. स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि प्रोजेक्ट वर्क से उनकी
लर्निंग चेक होगी, स्किल चेक होंगी, लर्निंग होगी भी उनकी, मतलब ऐसा नहीं कि चेक की होगी, लर्निंग होगी भी उनकी प्रोजेक्ट से। सो प्रोजेक्ट वर्क पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है एंड इट गेट्स 25 मार्क्स आउट ऑफ दैट। इंडस्ट्री इंटरेक्शन एंड इंडस्ट्री इंटर्नशिप ट्रेनिंग, कितनी की इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, डिटेल्स ऑफ इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोग्राम सच एज इंडस्ट्री सपोर्टेड लैब्स, partial review of appropriate courses, lectures in industry by industry experts with implementation details। मतलब यहाँ पे क्या है, industry should participate, industry should collaborate, institutions should collaborate, and industry support कर देती है, बहुत सारी जगह पे support करती है, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं सपोर्ट करती हमारे, उनको दूसरी तरह से इन्वॉल्व करिए, उनको कई लेक्चर के लिए बुला लीजिए, एक्सपर्ट्स के लिए। एक्सपर्ट को इंडस्ट्री, आई हैव सीन many of the industry experts do not want money from you, industry sponsors them, because after all what we are doing, we are producing diploma holders for industry only। इंडस्ट्री ट्रेनिंग पे भेजिए बच्चों को, भेजते ही हैं, बट जो इंडस्ट्री ट्रेनिंग पे हम भेजते हैं वो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, थोड़ा सा मतलब बहुत सारी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। थोड़ा सा मैंने बोला, इंडस्ट्री से ज्यादातर बच्चे इंडस्ट्री में जाते नहीं है, एक दिन जाते हैं और सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं। उसमें वी नीड टू डू ए लिटिल मोर, इसको हम सुपरवाइज ट्रेनिंग करिए, उसको हम स्ट्रक्चर ट्रेनिंग करें, उनको प्रोजेक्ट पे लगाया जाए, तभी बेनिफिट होगा, तभी सीखेंगे। 2.2.6 इंफॉर्मेशन एक्सेस फैसिलिटीज एंड स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग इनिशिएटिव्स, अवेलेबिलिटी ऑफ आईसीटी फैसिलिटीज, ई लर्निंग फैसिलिटीज और यूटिलाइजेशन कैसे है उनकी, क्या आपके पास ई बुक्स हैं, वाईफाई है आपका कैंपस, लाइब्रेरी की फैसिलिटी है जिसमें ई लाइब्रेरी हो। Initiatives to ensure students learning through ICT, information and communication technology, कितने का हम लगाते हैं, जो हम कोर्स कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी ICT है। 2.2.7 is new initiatives for embedding professional skills, initiatives for developing specialized skill development programs including communication, professional and core employability skills to enhance employability। बेसिकली तो जो हमारा प्रोग्राम का सारा एम है वो है टू इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी, सो दैट आवर स्टूडेंट्स हु आर पासिंग फ्रॉम द पॉलिटेक्निक्स दे शुड बी एम्प्लॉयबल। तो उसके लिए हमने क्या किया, क्या हमने उनकी कम्युनिकेशन इंप्रूव की, क्या हमने उसकी कोर स्किल्स इंप्रूव की, क्या क्या एक्शन लिए, co-curricular and extracurricular activities and points, क्या क्या करते हैं हम, बच्चों को किसी कंपटीशन में भेजते हैं हम, कोई आपके लिटरेरी इवेंट्स होते हैं, टेक्निकल कंपटीशंस होते हैं आपके यहाँ पे, क्या उनकी आपकी अचीवमेंट्स हैं, क्या आपके पास एनसीसी एनएसएस है, अगर है तो व्हाट आर द एक्टिविटीज व्हिच हैव बीन अंडरटेकन अंडर दिस। So this is 2.2.8. So this was criteria 2. Criteria 3 is again 100 marks. It talks about program outcomes and course outcomes. Program outcomes are basically what the students will learn and how you will check it. Course outcomes, that is related to the program. Course outcomes are why should we teach? What are the outcomes of the particular subject course? We have to define all here. Now let's see what are the program outcomes first. As per NBA, irrespective of the program, diploma program the students are undergoing, every diploma program, every student
who passes this, who goes through this diploma program, they should develop these 10 outcomes. These are called POs, program outcomes. First is basic knowledge, and ability to apply basic knowledge of basic mathematics, science, and engineering to solve the engineering problems. That means a diploma holders we are producing, when he passes out from your institute, he should have this much knowledge of basic mathematics, basic sciences, and one engineering discipline, basics of mechanical engineering, civil engineering, whatever discipline he is going through. He should be able to apply. He should know it, and he should be able to apply that knowledge to solve the engineering problems. One basic question I say is that engineers are required only to make the human life better. So by applying basic mathematics, basic sciences, and engineering, the student should be able to solve engineering problems. Second PO is discipline knowledge. An ability to apply discipline-specific knowledge to solve core and or applied engineering problems. So the second outcome we want from these diploma students, irrespective of the discipline, is discipline-specific knowledge. That means he should be able to apply the discipline-specific knowledge to solution of engineering problems. It may be existing problems you are trying to improve, existing systems you are trying to improve, or developing new systems. As I said, I have given you the example of a dryer, cloth dryer. It is application of basic principle of centrifugal force which we have applied and given a solution to the general public. Experiments and practice. Third outcome we want is experiments and practice. An ability to plan and perform experiments and practices and to use the results to solve engineering problems. As I said earlier, we should be able to, our diploma students should be able to plan and perform experiments. Why should we perform experiments? So that we are able to solve the engineering problems. We shall solve the problems using those results. We do experiments on specific occasions and we extrapolate, we make them generic, and we apply them in solving the problem. Otherwise, as I said, you have to draw a graph. Why should you draw a graph when you have the table? But probably we want to interpret something more than the table from the graph. Engineering tools. Apply appropriate technologies and tools with an understanding of the limitations. Basically, whatever engineering tools are available, one is the student should be made, they should be exposed to what are the engineering tools available to them, so that immediately they can use it. Instead of working from the very basic principles, if you have a ready-made tool available, I have a CAD package available, I have a finite element analysis package available, why should I do it manually? But at the same time, you see that process, we say we can do mathematical modeling of engineering problems, physical entities. At the same time, when you are applying this, whatever you are doing the mathematical analysis, whatever theoretical analysis you are doing, it may have some limitations, because you may not have one-to-one mapping of the physical entities. You will not be able to map 100% in the mathematics. So he should know, the student should know what are the limitations of the process. We were talking to industry, they say let's say we have done plastic flow analysis of a mold. They say sometimes what happens, कि यहाँ पे नहीं होता, सॉफ्टवेयर में नहीं होता, बट जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो प्लास्टिक फ्लो इज वेरी गुड. इसका मतलब वी हैव नॉट बीन एबल टू मैप प्रॉपरली, हमने सारे पैरामीटर उसका कंसीडर नहीं किए हैं.
Gentlemen, I have with me our director, Dr. M.P. Punia, and a few more distinguished guests. I'll stop here. You can interact with them. पुनिया जी आ रहे हैं, डायरेक्ट साहब आ रहे हैं, नीटल के इंटरेक्ट। Dr. Punia is director NITRR, so he is with us. You can talk to him. गुड मॉर्निंग सर। आप you can talk about the program, you can talk about your future requirements. क्या आपको चाहिए? चलो कोई क्वेश्चन गोयल साहब है? सर मैं पुरुषोत्तम सांकला बोल रहा हूँ सर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग। हाँ सर, हमारे कलीग्स हैं, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन सर लालचंद पवार जी हैं, पूछेंगे। हेलो। हाँ जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ये सिलेबस जो है करिकुलम, वो एनबीए का स्टैंडर्ड जैसे अपने स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। इट शुड बी स्टैंडर्ड फॉर थ्रू द वर्ल्ड। तो क्यों ना कि एनबीए कुछ अपना सिलेबस बनाए और उसी को हम कंटिन्यू करें। अच्छा, चलो 1 मिनट में पावला साहब को पहले रोकूंगा। यहाँ पे मेरे साथ में प्रोफेसर लोकेश सिंह शेखावत साहब हैं, जो अपने जैन व्यास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, फिर और भी यूनिवर्सिटी राजस्थान में वाइस चांसलर है। सर, आपका मैं नीट चंडीगढ़ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी सर। आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है, हमारे प्रोफेसर पावला साहब हैं, मैकेनिकल के प्रोफेसर हैं आप, और हमारा कोऑर्डिनेशन का काम इंस्टीट्यूट का देखते हैं पूरी कंट्री में, सारी कंट्री के साथ हम लोग आपस में कैसे जुड़े हैं। इनका जो मेन स्पेशलाइजेशन जो इनका है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में क्वालिटी को कैसे इंश्योर करें। आज सबसे बड़ा चैलेंज कंट्री में ये है कि एक्सपांशन हैज टेकन प्लेस, सीरियस एक्सपांशन, नॉट ओनली एक्सपांशन वाज जस्ट लाइक एक्सप्लोजन इन लास्ट 10 years. The way the technical education has expanded, it was beyond imagination. No one has thought of it. न बच्चे तैयार थे, न टीचर तैयार थे, न पेरेंट्स तैयार थे। तो very serious challenge the country is facing, and particularly in technical education, the quality of the students are very poor. ये सबसे महंगी एजुकेशन है, और 90% टेक्निकल एजुकेशन प्राइवेट जो है यूनिवर्सिटीज के पास में है, जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। हो सकता है दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में कम हो, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम इस देश की है, करीब 52-53 हजार रुपए एक आदमी इस देश के अंदर कमाता है, और उसको अगर एक बच्चे को पढ़ाना हो हायर एजुकेशन आफ्टर 12th क्लास, more or less fee structure of the private institutes, colleges, if you see in professional institutes, it is 1 lakh, roughly 1 lakh it is there, and उसका ही करीब हॉस्टल का और बाकी चीजों को खर्चा करना पड़ता है। तो 2 लाख रुपए एक बच्चे पे उसको इस एजुकेशन का खर्चा करना पड़ता है। इस पर कैपिटा इनकम इज ओनली 50,000। तो ऐसी कोई इकोनॉमिक्स काम नहीं करती, ऐसी कोई बैलेंस शीट दुनिया के अंदर नहीं है जो 2 लाख का खर्चा करो, 50,000 कमाओ, आप जो है जीवन भर सुखी रहो। ऐसा संभव नहीं हो सकता। और किसी व्यक्ति के अगर 2 बच्चे हुए और साइमल्टेनियसली 2 को पढ़ाना है विद दिस अर्निंग्स, आई थिंक इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। चलो, उसने लोन लेके, उसने जमीन गिरवी रख के, मकान गिरवी रख के बच्चे को पढ़ाया, लेकिन जो बच्चा हमारे यहाँ से इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक करके जाता है, जब वो नौकरी करने की बात सोचता है, नौकरी के लिए अप्लाई करता है, इंडस्ट्री के लोग ये कह रहे हैं कि तू हमारे काम का ही नहीं है। उसने 4 साल के अंदर 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, सारा कुछ जो है गिरवी रखा गया। And when question of serving to nation is coming, question of serving to his parents is coming, the society is denying कि आप हमारे काम के ही नहीं हो। हम लोग इंडस्ट्रीज वाले को यहाँ पे बुलाते हैं, नीटर में बुलाते हैं कि भी आप लोग आओ तो सही, आप कमियां तो बता रहे हो दूर बैठ के कि ये कमियां हैं, ये कमियां, आप बताओ तो सही हमारे बच्चों में कमियां क्या है। तो सबसे पहली बात तो जैसे अभी मिस्टर पवार ने अपने से पूछा था कि सर जो करिकुलम है, जो कंटेंट्स इनको पढ़ाते हैं अपन 3 साल या 4 साल,
वो चीजें हम वो पढ़ा रहे हैं जो 30 साल पहले गुजर चुकी है। इंडस्ट्रीज आज 15 साल बाद आगे की बात करती है और हम लोग 30 साल पहले की चीजें पढ़ा रहे हैं, तो ये आपस में मैच कैसे होगा? आज हम लोग अभी भी सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टीम इंजन पढ़ाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब बात करते हैं कि मैं पायलट ट्रेन लेके आऊंगा देश के अंदर जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, और जो करिकुलम में हम लोग पढ़ा रहे हैं वो उस गाड़ी का पढ़ा रहे हैं जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही है। तो हमने ट्रेनिंग वो दी, उस बच्चे को जाके पायलट ट्रेन का प्रोजेक्ट अगर इंडिया में एग्जीक्यूट करना है, हाउ ही विल बी एबल टू डू जस्टिस। तो इंडस्ट्री वाला कह रहा है कि यार आपने जो चीजें पढ़ाई वो मेरे काम की नहीं है। तो अभी जो टीचर जिन्होंने सजेशन दिया है वो ये कह रहा है कि साहब ये अलग अलग करिकुलम क्यों बन रहे हैं? करिकुलम एक राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्र की आवश्यकता के हिसाब से जो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है वो एक कॉमन करिकुलम ही बना दे, जिसमें सारी इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट, सारी इन जनरल सोसाइटी की रिक्वायरमेंट, जिसमें रिसर्च कंपोनेंट भी हो, एक एथिक्स की बात भी करें, टीम बिल्डिंग की बात भी करें, कम्युनिकेशन स्किल्स की भी बात करें। जितनी कमियां अपन बता रहे वो करिकुलम में जोड़ी क्यों नहीं देते आप? जो है एक सा ही करिकुलम क्यों नहीं बना देते? ये AICTE ने बनाए हैं करिकुलम, और अगर AICTE की वेब पोर्टल पे अगर जाएं तो मॉडल करिकुलम वहां पे बने हुए। इट मे नॉट बी 100% एप्लीकेबल टू एवरीवन। मॉडल मींस करीब 70% चीजें अपन उनमें से एज इट इज ले सकते हैं, 30% स्टेट स्पेसिफिक भी है। हर स्टेट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट। आज जो आप बच्चा तैयार कर रहे हो, सारे बच्चों को विदेश नहीं जाना है, सारों बच्चों को पूरे इंडिया में काम नहीं करना है। काफी बच्चे आप जो पॉलिटेक्निक की एजुकेशन देते हैं, मेरे हिसाब से 70 से 80% बच्चे जो राजस्थान में पढ़ रहे हैं, मोर और लेस दे आर सर्विंग इन द राजस्थान ओनली। सो आपके करिकुलम में राजस्थान से रिलेटेड कंपोनेंट, वहां की जो इंडस्ट्रीज है, वहां की लोकल जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से भी बच्चों को काम करना है। सो मोर और लेस 70% कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम इज फिक्स, दैट इज अकॉर्डिंग टू मॉडल करिकुलम। जो एडिशनल चीजें हैं, और हम लोग हेल्प भी करते हैं आप लोगों को डिजाइन डेवलप करने में। करिकुलम ऑफ 9 states of the polytechnic we people are developing. We are inviting many industry people also here. We are going in these states, we are doing workshops there, we are taking input from our teachers of the polytechnics, director technical education, unke principals, industries se we are taking inputs, and on the basis of that one we are devising the curriculum. So curriculum का आपका सजेशन बिल्कुल सही है, ये ऑलरेडी सरकार ने प्रयास शुरू कर रखे हैं, ये बन गए हैं करिकुलम। तो मेरे हिसाब से जो आपकी क्वेरी है वो करीब करीब ये समाधान इसका हमें ठीक लगता है। मैं भी यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा। जी सर। मैं हायर एजुकेशन की कई कमेटी से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और ये जो यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री लिंकेज की बात चल रही है, पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वोकेशनल कोर्सेज के लिए यूजीसी ने काफी हद तक ये फ्रीडम दे रखी थी कि आप अपने लोकल एरिया पर जहाँ जो जैसी इंडस्ट्रीज में, उन इंडस्ट्रीज से लिंकेज करके उन वोकेशनल कोर्सेज में आप अपना करिकुलम तैयार कीजिए। उसका रेशियो जहाँ तक मुझे ध्यान है 70 to 30% होता था, 70% लोकल इंडस्ट्री के हिसाब से और 20% ऑल ओवर नेशनल लेवल पे। ये आपका बहुत अच्छा सजेशन है इस आधार पर, और मैं कल से यहाँ पुनिया साहब के साथ हूँ, और इनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं पिछले 3 साल में, इन्होंने बहुत अच्छे से प्रयास किए हैं। मैं उसके लिए इनको हार्दिक साधुवाद देना चाहता हूँ, और आप सबकी जो जिज्ञासाएं हैं, जो प्रश्न हैं, उनको ये और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति होने के नाते समझते हुए उन सब का निराकरण करने के लिए और इस संस्थान को डेवलप कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। नाउ जस्ट आई वांट टू अप्राइज यू सर, नाउ दिस accreditation has become mandatory. This National Board of Accreditation, it is saying to every institute, earlier it was the part of AICTE only, जैसे UGC का part NAC था, now NAC has become one independent body, it is autonomous body. In the same fashion, NBA is also autonomous body. NBA has given direction to all the polytechnics, all the engineering colleges, that you won't be permitted to increase your intake from AICTE till you are not getting NBA accreditation of your programs. एक तो NAC और NBA में फर्क ये है कि NAC पूरी इंस्टीट्यूट को एक्रेडिट करता है या यूनिवर्सिटी को एक्रेडिट करता है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग करता है वो, या इंस्टीट्यूट की रैंकिंग करता है। NBA डिपार्टमेंट वाइज रैंकिंग करता है, प्रोग्राम वाइज। जैसे एक इंस्टीट्यूट के अंदर
अलग अलग प्रोग्राम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, सिविल इंजीनियरिंग का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, तो वो प्रोग्राम वाइज एक्रेडिट करता है। माइक्रो हाँ, वो एक तरह से माइक्रो लेवल पे जा रहा है। आपका नेक जो है मैक्रो लेवल पे है, ये माइक्रो लेवल पे जा रहा है। और इनको 1000 मार्क्स का इनके अलग अलग क्राइटेरिया जो प्रोफेसर जो पावला साहब इनको कह रहे हैं, जिसके अंदर ये क्राइटेरिया भी है कि जो आपका करिकुलम कैसा है, उस करिकुलम को आप डिलीवर किस तरह से कर रहे हैं, उसको पढ़ाने वाले लोग कैसे हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, आपके पास स्टूडेंट्स कैसे है, उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उनको नौकरियां कैसी मिल रही हैं, बच्चे के सद्गुण क्या हैं, उन क्राइटेरियाज के बेसिस पे 1000 मार्क्स उन्होंने किए हुए हैं। 1000 में से जिसको किसके 600 या 600 से ज्यादा आ जाते हैं, उनको 2 साल के लिए वो सर्टिफिकेट देते हैं कि 2 साल के लिए आप प्रोविजनली एक्रेडिट हो गए हैं। जिनके 750 से ऊपर मार्क्स आते हैं 1000 में से, उनको 5 साल का वो सर्टिफिकेट देते हैं। सो हर पॉलिटेक्निक, हर इंजीनियरिंग कॉलेज को अब मैंडेटरी हो गया है। और इसके लिए ये बड़ी रिग्रेस एक्सरसाइज है। पावला साहब 1.5 दिन से आपको जैसे इसमें टाइम ले रहे हैं, इवन इसका परफॉर्मा बड़ा रिग्रेस है। अभी जिस ये सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं, ये रिपोर्ट हम लोगों ने बैठ के बनाई है पूरी कंट्री के लिए। वी वर पार्ट ऑफ दैट रिपोर्ट, जिसमें सारी चीजों का हमने ध्यान रखा है। और पहले वाली रिपोर्ट जो सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट का परफॉर्मा था, वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड था, सम कंफ्यूजन्स थे। नाउ इट इज मोर और लेस इजी। अभी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं आप सब नए के हिसाब से दे रहे हैं, नए के हिसाब से दे रहे हैं। 1 जनवरी से एप्लीकेबल, 1 जनवरी से ये आपका एप्लीकेबल होगा। और हम लोग ये चाहेंगे कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में जो सारे के सारे 7 या 8 क्राइटेरिया इसके अंदर हैं, इन 8 क्राइटेरियाज को अपनी इंस्टीट्यूट से भरने के हिसाब से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस आप में आ जाना चाहिए। और जैसे ही आप भरोगे तब पता चलेगा कि कितनी कमियां है। ये तो कि 1000 में से अपने तो 400 मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, कहीं पे टीचर्स नहीं है, कहीं पे जो है आपकी बिल्डिंगें नहीं है, कहीं रिजल्ट ठीक नहीं है। पॉलिटेक्निक्स का भी मेरे को पता है, राजस्थान में जैसे जितना एक्सपांशन हुआ, government polytechnics were doing wonders, very good faculty we had, infrastructure was very good, but जैसे ही expansion हुआ, your quality multiplied by quantity is constant. जैसे ही quantity बढ़ाई, quality has gone down, the multiplication is constant. तो ये quantity बढ़ने से quality एक serious challenge हो गया है। तो आप भरोगे तो आपके सबसे बड़ी दिक्कत गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स की जो मैं असेस कर पाता हूँ राजस्थान में, you are having a huge shortage of teachers. You don't have teachers. जहाँ पे 25 टीचर होने चाहिए, वहां पे 2 टीचर्स हैं आपके पास। एंड मेजोरिटी ऑफ द वर्क यू आर असाइनिंग टू गेस्ट फैकल्टीज। एआईसीटी कह रही है कि हम गेस्ट फैकल्टी को आपके उसके अंदर नहीं मानेंगे। आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर की है, उससे कम क्वालिफिकेशन का आपका टीचर है, तो हम उसको नहीं मानेंगे। सैलरी आप उसको पूरी नहीं दे रहे हैं, तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो उनके काफी स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया। तो आप लोगों की सबसे बड़ा चैलेंज पॉलिटेक्निक में ये आएगा कि आपके पास टीचर्स वाली प्रॉब्लम है। और इवन आपके प्लेसमेंट भी, प्लेसमेंट के ऊपर वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे कि आपका पॉलिटेक्निक किया हुआ बच्चा बीटेक में कितने जा रहे हैं। 3 साल की पॉलिटेक्निक के बाद यू कैन एंटर इनटू बीटेक आल्सो इन सेकंड ईयर, लेटरल एंट्री है, पर उसको ज्यादा वो वेटेज नहीं दे रहे। वो ये करें कि पॉलिटेक्निक का बच्चा तो पॉलिटेक्निक की ही नौकरी जो है करे, उसको फील्ड में जो है जाके जो काम करना है, सुपरवाइजरी रैंक पे जो काम करना है, वो प्रायोरिटी उसकी उस पे है कि जिस चीज की पढ़ाई की उसने, उसके अंदर जाके वो जो काम करे, तो ज्यादा वेटेज वो उस चीज को दे रहे हैं। तो लेटरल एंट्री को भी आप ये समझें कि आपके लिए कोई स्ट्रेंथ होगी, ये भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं होगी। फिर वो ये देखना चाहते हैं कि आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं क्या। आप 1 साल पहले कैसे एक थे, 6 महीने पहले कैसे एक थे, आज कैसे एक है, आने वाले टाइम में आपकी क्या प्लानिंग्स हैं। they are giving very serious stress on this one, that how your graph is moving. Are you moving upward rapidly, you are moving upward, or it is downward trend? आपका अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो आपको वो बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो इस चीज को असेस कर रहे हैं कि अगर आपका 60 का इंटेक है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, अगर आपके एडमिशन वहां पे 30 ही हो रहे हैं, तो वो उनको पक्का पता चल गया कि अपन उनको क्वालिटी बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपके उस ब्रांच में नहीं आ रहे हैं। सीधा सा उनका पैमाना है कि अगर सीट ही नहीं भर पाए तो आपका काय का एक्रेडिटेशन लोग जो है, अगर वो दे भी जाए आपको 2 साल का, तो लोग एक जगह हंसाई होगी कि यार एडमिशन तो हो नहीं रहे, और उनको आपने एनबीए एक्रेडिट कर दिया। तो इट इज अगेन इज बिकमिंग ए वेरी सीरियस इशू। सो ऑल दीज पैरामीटर्स व्हिच आई एम डिस्कसिंग, दे आर वेरी सीरियस। एंड इन फैक्ट टीचर्स की जो कंटिन्यूअस लर्निंग है, आप लोगों को भी कंटिन्यूअस लर्निंग है, जो स्टेग्नेशन है वो तोड़ना है, और उसमें नीटर चंडीगढ़ जो भी अपनी भूमिका अदा कर सकता है। वी पीपल आर रेडी। दिस प्रोग्राम वी हैव डिजाइन्ड ओनली फॉर पॉलिटेक्निक्स ऑफ राजस्थान। जस्ट समटाइम्स बैक आई विजिटेड श्री गंगानगर पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। वहां पे भी मैंने देखा करीब 40 टीचर्स की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वहां 8 लोग थे।
और उन ये जो AICTE के एक्रेडिटेशन का भी उनके इश्यू आ गया है, तो वहां मैंने इमीडिएटली बात की कि आप एक बार सारे राजस्थान के टीचर्स को इकट्ठा करो, एक जगह इकट्ठा करो, प्रिंसिपल्स को इकट्ठा करो, वी वुड लाइक टू गिव मैसेज कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाउ इट इज मैंडेटरी, अदरवाइज इस तरह से इंस्टीट्यूट को अलाउ नहीं करेंगे। आपके पास टीम आ गई, आपके पास टीम आई, आपके विजिट किया, और अगर आपके किसी ब्रांच को उन्होंने कह दिया नोट एक्रेडिटेड, नोट एक्रेडिटेशन का अपने पास रिप्लाई नहीं होगा, एंड फाइनली दे आर रिकमेंडिंग व्हाई इट शुड नॉट बी क्लोज्ड। अगर ये एक्रेडिटेशन के योग्य नहीं है तो इस ब्रांच को क्लोज क्यों नहीं कर दिया जाए? तो हमारे सर पे जो है हमारी नौकरी की भी तलवार, ये एक तरह से ये मानो किसी भी पॉलिटेक्निक्स की कोई ब्रांच के आप टीचर हैं और अगर उस ब्रांच के लिए वो कमेटी कह देती है कि एक्रेडिटेशन योग्य नहीं है आपकी ब्रांच, सो अपनी नौकरी पे भी तलवार जो है लटक जाएगी। तो ये आने वाला टाइम, ये कंपटीशन का टाइम, इट्स वेरी टफ टाइम, वी पीपल विल हैव टू वेरी सीरियसली विल हैव टू लुक इनटू दिस मैटर। और पावला साहब ओपन है, इनकी मेल भी है, इनके फोन नंबर भी हैं, आपको अगर वो भरने में परफॉर्मा भरने में बाद में भी दिक्कत आती है, एवरी टाइम आवर टीम इज रेडी। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। अगेन थैंक्स टू यू सर, यू हैव बिकम द पार्ट ऑफ आवर दिस वन। ईश्वर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और इंस्टीट्यूट में आपकी हम रेगुलर हेल्प लेते ही रहते हैं। दरिया सिंह जी आपके ब्रदर हैं, इज डिप्टी डायरेक्टर देयर सर इन राजस्थान जो है, हाँ आप जो है IFS है। तो थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू। I thank Professor Punia and Professor Vyas, Ishwar Singh ji, for joining us in the program. I also thank from my all colleagues to Dr. Punia ji and you yourself. Thank you very much, sir. You address us. One person has a query, sir. Dr. Punia. Please. Dr. Punia से है तो पुनिया साहब की तरफ कर देता हूँ। ठीक है, बताओ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मैं चूरू से हूँ। अच्छा, नाम बताओ अपना। विजेंद्र नाम है सर। हैं? विजेंद्र कुमार नाम है सर। बताओ विजेंद्र, बताओ। सर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि प्रिंसिपल्स को इस मीटिंग में आज होना चाहिए था, कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जिसको समझना चाहिए था वो आया नहीं है और सिंपली लेटर निकाल के भेज दिया गया। एक तो मेरे को प्रॉब्लम्स मत बताओ, we are here for the solutions, don't tell me the problems. आप तो ये है कि जब तक ये हायर लेवल पे ये चीज नहीं होगी, एक लक्ष्य को सिंपली वो क्या कर सकता है। लिसन, कमियां मत निकालो आप जो है ना। और जब नौकरी आपकी जाएगी ना, प्रिंसिपल साहब की नहीं जाएगी, छोड़ इन चीजों को छोड़ो। अब ये बहुत लड़ाइयां लड़ ली अपन ने जो है, कभी कुछ अचीव नहीं हुआ। यू इम्प्रूव योरसेल्फ। MBA के बारे में कुछ मेरी बात सुनो आप लोग, मेरी बात। जो MBA के मैनुअल्स हमने स्टडी किए हैं, इन मैनुअल्स में जो विजन, मिशन और ये जो डिफाइन करना है, ये एक क्यूरिकुलम जो है हमारे राजस्थान स्टेट का एक ही है। तो ये डायरेक्टरेट लेवल पे या एक स्टेट लेवल पे ये हो, और उसके बाद में हम उस चीज को मैथड्स को अप्लाई करके और इंस्टीट्यूशन लेवल पे उस काम को कर सकें, जिससे कि 2 साल में 3 साल में MBA करने लायक हो। अच्छा, अब जो करिकुलम के मार्क्स है ना, आपके करिकुलम के मार्क्स बहुत कम है इसके अंदर। वो इसलिए मार्क्स कम है कि करिकुलम तो सिर्फ एक जगह ही बनता है, आपकी पॉलिटेक्निक उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है करिकुलम के लिए। जिस तरह से एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी करिकुलम बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपकी जिम्मेवारी जो ज्यादा वेटेज है उस करिकुलम को कितना इफेक्टिवली आप डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है। तो आपके ज्यादा मार्क्स ये हैं कि आपकी ऐसी क्या इनोवेटिव अप्रोचेज हैं जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और नॉट ओनली करिकुलम, बियॉन्ड करिकुलम आप क्या पढ़ा रहे हैं। आपका कॉलेज लगता है 9 बजे से 4 बजे तक या 9 बजे से 3 बजे तक, लेकिन दिन रात तो 24 घंटे की होती है भाई। आपकी रेलवे 24 घंटे काम करती है, आपके हॉस्टल 24 घंटे काम करते हैं, किसान इस देश का जो 18-16 घंटे काम करता है। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूट में वो ये चाहते हैं कि टीचर्स कितना प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, और बियॉन्ड करिकुलम वो क्या पढ़ा रहे हैं। करिकुलम तो एक इतना सा है, एक दायरा थोड़ा सा मिनिमम फिक्स किया हो, उससे ज्यादा तो अपन कितना ही आगे जा सकते हैं। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप। Most of our teachers are in polytechnics MTech now, and even some of them are pursuing PhD. Many of them have completed PhD. तो उन्होंने जो उस MTech और PhD का ज्ञान अर्जित किया है, उसका कुछ हिस्सा भी अपन पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, तो उसके भी बहुत ज्यादा मार्क्स है। तो करिकुलम बनाया किसने, कैसा बना हुआ है, उसके भी आप चिंता मत करो। उससे ज्यादा जाने में तो कोई नहीं रोकेगा आपको जो है। आपको मैंने प्रेजेंट किया कि 9 क्राइटेरियाज हैं, उसमें से करिकुलम वाला एक ही है।
इंजीनियरिंग की एक में वेटेज कम बहुत है, बहुत कम वेटेज बहुत कम मार्क्स हैं उसके। Sir, our one colleague has questions to Dr. Punia ji. सर मैं अभी जालोर पॉलिटेक्निक में प्रिंसिपल हूँ। वहाँ पे हमारा अभी कॉलेज जो है पॉलिटेक्निक पाली में चल रहा है। हम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पाली के साथ शेयर कर रहे हैं। अभी हमारा इंडिपेंडेंट मतलब परमानेंट साइट पे नहीं हुआ है। सेल्फ एक्रेडिटेशन कर रहे हैं, ये सेल्फ असेसमेंट ये किस तरह से करें, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट, आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा से रिपीट करना क्वेश्चन जो है। आई कुडंट लिसन प्रॉपरली। सर हमारा कॉलेज जो है पाली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल पार्टी के साथ में शेयर कर रहा है सारा बिल्डिंग और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। जालोर का पॉलिटेक्निक जो है वहां पे चल रहा है, पाली में चल रहा है सर। पाली पॉलिटेक्निक के साथ शेयर कर रहा है सारे इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, तो अब हमारे पास ये आ रहा है कि आप एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करिए, तुरंत अप्लाई करिए, ये बार बार चिट्ठी भी आ रही है। और तो अब इसमें हम किस तरह से सेल्फ असेसमेंट करें और कैसे मतलब अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये चीज आप थोड़ा सा बताएं। एक तो ये है कि कम से कम तीन बैच का है ना, दो बैच आपके पॉलिटेक्निक, तो जालोर पॉलिटेक्निक के 2 बैच निकल गए, एक बैच निकल गया सर। आप एलिजिबल तब होंगे जब आपके 2 बैच निकल जाएंगे। और जालोर में तो हमने वो एमएचआरडी वाली बिल्डिंग बनाई है, नहीं एमएचआरडी वाला पैसा दिया था ना जालोर में, तो नहीं वो पर कंप्लीट नहीं हुई सर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है आपका। तो कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट साइड से ही हमें जो पैसा जितना जाना था, ये बिल्डिंग बननी चाहिए थी, शायद नहीं बनी है उसके अंदर, और 2 बैच जब तक नहीं निकलेंगे तब तक आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो आपके लिए बैच तो निकल गए सर, 2 बैच निकल चुके हैं। हाँ सर, तो लेकिन हमारा मतलब जो है हम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पाली के साथ शेयर कर रहे हैं। फैकल्टी भी और कुछ फैकल्टी हमारे पास है, कुछ शेयर हो रही है, बाकी लेबोरेटरीज वगैरह सब शेयर कर रहे हैं। तो शेयर में अलाउड नहीं है किसी भी तरह से। जो एनबीए का जैसे अप्लाई करोगे आप, वो शेयरिंग वाला नहीं, आप अप्लाई तभी कर पाओगे जब आपकी जालोर के अंदर आपकी सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी, स्टेब्लिश हो जाएंगी, तभी आप जो है उसमें अप्लाई करना। पहले कोई गलती मत कर देना, वो एआईसीटी नहीं तो जालोर भी बंद कर देगा, पाली भी बंद कर देगा, ऐसा काम मत कर देना आप लोग गलती से भी। ठीक है सर, थैंक यू। Our madam has one question to Dr. Punia ji, sir. नमस्कार सर। मॉर्निंग सर, मैं मंजू शर्मा, महिला अजमेर से। सर हमारा क्वेश्चन है कि महिला पॉलिटेक्निक में प्रोग्राम्स रन करते हैं जैसे ब्यूटी कल्चर, सीडीडीएम यानी कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग, क्या वो भी एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मेरे हिसाब से उनका भी नहीं है ना। जो नॉन इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज हैं, ये नॉन इंजीनियरिंग वाली कैटेगरी में है ना अपने कोर्सेज जो हैं। सर नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज, नॉन इंजीनियरिंग वाले अभी अप्लाई नहीं करने हैं इस स्टेज में। अभी जो हमने एसएआर और बनाई है वो इंजीनियरिंग के हिसाब से बनी है। आने वाले टाइम में शायद 1-2 साल में इनका भी आ जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट का जो एमबीए प्रोग्राम है उनका अलग से बन रहा है और इनका बन रहा है, तो इट विल टेक टाइम। फार्मेसी का बन गया है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट आप लोग अपनी प्लानिंग तो करिकुलम वगैरह की, डिलीवरी वगैरह की, आपके जो फाइल इंस्ट्रक्शन मटेरियल जिस तरह से तैयार करना है, जो इंस्ट्रक्शन की डिलीवरी की अप्रोचेज हैं, आपके असेसमेंट के मेथड्स हैं, वो तो तैयार करना, तो आप मेंटली तो अपना तैयार होना शुरू करें। एक क्वेश्चन और, जैसे महिला पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग कोर्सेज चल रहे हैं, वो तो एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो बस कंडीशन ये है कि 2 बैच आपके निकले हुए होने चाहिए उसके। जरूरी तो है पुनिया जी। हेलो, नहीं भी चौधरी सर बोल रहे सर। हाँ बताओ तो सब बताओ। हाँ, मैं अभी वर्तमान के अंदर नागौर पॉलिटेक्निक के अंदर सीनियर लेक्चर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। जी। तो हम एनबीए एक्रेडिटेशन के बारे में हमारा भी एक भी बैच नहीं निकला हुआ है। तो हमने दरिया सिंह जी से कहा है कि एनबीए एक्रेडिटेशन के लिए हमारा एक भी बैच नहीं निकला। तो यादव साहब कहते हैं आप सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट बनाओ। तो हमने उनको बोला भी हमारा एक भी बैच नहीं निकला, आप कुछ नहीं, आप तो अपनी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट करके तैयार करके लेके आओ। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, रिपोर्ट बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी? हमारा एक भी बैच अभी तक नहीं निकला हुआ है। जब भी हमने ये प्रॉब्लम लेके यादव साहब के एनबीए एक्रेडिटेशन की प्रॉब्लम लेके जाते तो एक भी जवाब करता है प्रॉब्लम बाद में लेके आना, पहले तो आप सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट भर के लेके आओ।
और एक भी हमारा बैच अभी नहीं निकला है। अनुमत सुनो, आप मेरी बात जो है, एचपी साहब सुनो मेरी बात, वो पहले परफॉर्मा देखो आप, पहले परफॉर्मा आप देखो। अपन कोई शादी करते हैं ना, रिश्ता करते हैं, लड़की की ये कोशिश करते हैं 2 साल पहले से ही देखना शुरू करें, देखते हैं उसके परिवार को, उसके संस्कार को, उसके जो जो और जो चीजें, तैयारियां, घर में भी तैयारियां। एकदम से जब बारात अपने गेट पे आ जाएगी, उस टाइम ये सोचो मैं टेंट की व्यवस्था करूंगा, उस टाइम ये सोचो मैं गहनों की व्यवस्था करूंगा, हनुमान जी कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल यादव साहब आप लोगों को बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम से अपने पास तैयार होने के लिए टाइम चाहिए। आपका परफॉर्मा है उसमें 3 साल के डेटा है, आपके पास 3 साल से पॉलिटेक्निक चलते हुए हो गए, वो डेटा तो शिफ्ट हो जाएंगे, बस ये है कि चौथे साल का होते पहले साल वाला कट जाएगा, तो 3 साल के ही डेटा भरे जा रहे हैं उसमें। इस साल के एकेडमिक रिजल्ट्स, पिछले साल के एकेडमिक रिजल्ट्स, उसके पहले साल के एकेडमिक रिजल्ट्स, इस साल के प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स, पिछले साल के, उससे पिछले साल के, 3 साल के आपके पास हर एक सारे अवेलेबल है। आप उसके हिसाब से भरना, आप तैयारी करना शुरू करो, ये तो शिफ्ट हो जाएंगे ओरिजेंटली। तो सर एक निवेदन, ये प्लेसमेंट की बात कर, अभी तो एक बैच भी निकला नहीं है, पास आउट नहीं हुआ एक भी बैच। आप प्लेसमेंट वाला खाली छोड़ देना, कोई बात नहीं, बाकी सारी चीजें बजट की है, उसके अंदर एडमिशन के कट ऑफ्स हैं, आपके जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात है, उसकी इंस्ट्रक्शन की प्लानिंग है, आपके आउटकम बेस्ड एजुकेशन को बच्चों के बीच में प्रमोट करना कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्या है। सबसे बड़ा तो आज जो सिखाना है बच्चों को, एकदम से बच्चा नहीं सीखेगा ना टीचर सीखेगा, एकदम से ऐसी एजुकेशन आ गई है। अब तक की हमारी एजुकेशन ये थी कि जब बच्चे को हम पढ़ाते थे, टीचर की साइड से ही ज्ञान फ्लो होता था। आउटकम बेस्ड एजुकेशन में वो ये कह रहे हैं कि हम इस चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कि आपने क्या ज्ञान फ्लो किया है, वो ये कह रहे हैं कि बच्चा क्या कैरी करके लेके जा रहा है। हमें तो वो बताओ, आपने पॉलिटेक्निक में 3 साल के अंदर 21 सब्जेक्ट पढ़ाए, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए? वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर इंटरेस्टेड फाइनली व्हेन इज गोइंग आउट फ्रॉम द गेट ऑफ द पॉलिटेक्निक, व्हाट इज कैरिंग, उसके हाथ में क्या ज्ञान है, वो असेस करना तो शुरू कर दो। तो सेकंड ईयर में असेस कर सकते हो भी फर्स्ट ईयर वाला कितना सा ज्ञान उसके पास में, हु स्टॉप्स यू, नो वन। गैप असेसमेंट करना सर सेकंड प्रॉब्लम ये सर, सेकंड प्रॉब्लम सर, सेक्रेटरी साहब ने ये चिट्ठी लिखी 15 तारीख तक आप एप्लीकेशन अप्लाई करो, एनी आओ, तो क्या अप्लाई करना चाहिए सर? आप भर लो, परफॉर्मा कोई उसमें नहीं लग रहा है, आपके उसके ऊपर वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, परफॉर्मा का प्रिंट निकाल लो और आप उसके अंदर जितना भर सकते हो उतना भर के, और ये कि सर कंडीशन ये है कि आने वाले टाइम में और डेटा हमें चाहिए, उसके लिए अभी 2 साल अपने को वेट करना पड़ेगा, तो भरना शुरू कर दो, क्या दिक्कत है? वो अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं सर कि तो उसमें फीस, रजिस्ट्रेशन की फीस लगती है सर उसमें, तो ऐसी स्थिति में अप्लाई कर सकते हैं क्या? कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका फॉर्म, जब अप्लाई करने ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना अपन, तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए तो सर नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा वो, क्योंकि ईयर ऑफ स्टार्ट और ईयर ऑफ एंडिंग जिसमें 2 बैचेस का नहीं होता, वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करेगा। पैसा तो अपना तब लगेगा जब रजिस्टर, क्योंकि वो ईयर के हिसाब से लेगा ही नहीं सॉफ्टवेयर आपका। थैंक यू सर। चलो ठीक। On behalf of all of you and on my behalf, I thank Professor Vyas, Mr. Ishwar Singh and Professor Punia, Professor Shekhawat, Professor Ishwar Singh and Professor MP Punia for being part of our program today and having very live interaction with you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So, well, friends, back to our Yes, sir. switch off your mic. आप वाला mic switch off करिए, please. So, we were talking about what are the outcomes this diploma engineer should have. He should be able to use engineering tools. 5th point, if you say, is very important: engineer and society. Now, the diploma holders you will produce, they will not work in isolation. They have to work in society. So they should not be aloof to the societal needs, health, safety, legal and cultural issues. And what are the responsibilities of his discipline as a diploma engineer?
he should be told. He should be told that he doesn't have to hurt the feelings, cultural, religious, societal, environmental issues, which is coming as point 6. Ethics. Apply ethical principles and commit to professional ethics and responsibilities and norms of the engineering practice. We are talking about professional ethics only. Normal ethics, general ethics, societal ethics, he should have learned earlier. Individual and teamwork. Somebody told a very, very interesting thing. He said, one Indian engineer is better than 10 Japanese engineers. But at the same time, he said that 10 Indian engineers put together are not even equivalent to one Japanese engineer. No, he was not telling about one engineer and 10 engineers actually. What he wanted to convey here was that we lack this teamwork spirit. When we are working in a team, it becomes nobody's responsibility, nobody's work. So we have to teach them to be able to work in teams. Teams of his own discipline, teams at different levels, interdisciplinary teams, very important, because none of the engineering branches is now aloof from other engineering areas. Mechanical engineer, a civil engineer, they all have to learn computers, electronics, and they have to work with them, interdisciplinary teams. Next is communication, an ability to communicate effectively. This is what people are now saying, that communication is very important. Now communication becomes very important in the sense that whatever you know, you should be able to communicate. A very good, very intelligent person, if he is not able to communicate his ideas, is of no use. Similarly, only communication will not work. You should know your core areas also. Lifelong learning. I have talked already. So what we need is, we have to keep, when we are teaching, let's say curriculum is there. When we have to teach, we are not teaching, let's try to integrate all these 10 things. Let us say we try to map all these 10 things into the curriculum. And mapping can be done at one place, as somebody was telling, maybe central place you can do curriculum, but then at the same time, somebody raised the question of curriculum, common curriculum, and Dr. Punia very aptly replied that it cannot be 100% common. It is, let's say, 70% common, 75% common, then 30% will take care of the local needs. One more question was coming, whether somebody can apply or not today. One of the participants said that they have not passed even one batch. It is very good for them. They should start working now itself. I often tell people that let us not talk, let us not create papers for the NBA. Let us start working on NBA accreditation. Let's start practicing it. What Professor Punia said, outcome-based engineering education. Let us not talk about outcome-based engineering education. Let us practice engineering education, outcome-based engineering education. Let us start implementing it. If you start implementing from the very beginning, those polytechnics which are new, they will have the edge that they don't have to work hard, extra work, they don't have to do for completing the SAR. I'm happy that you are all working on SAR. Your department has told you that you have to fill the SAR. Fill the SAR. Download the Performa. Start filling it, and as it says, self-assessment report. Do your self-assessment. Tell to your directorate that okay, we have done it, we have filled it. Now these are the areas where we are lacking. As Professor Punia was telling, instead of 40, you have only 8 faculty members. I'm very sure you also be sure that you will not get accreditation.
So let state government take action. So these are the 10 program outcomes. Let me go back. We are getting. Let's go back to where we left. Okay, we were here. We were here. So we have seen that establish the correlation between the courses and the program outcomes and program specific outcomes. Now what is this program outcomes? I have listed you. I have shown you the 10 program outcomes. But what is this program specific outcomes? If you see the POs which I have discussed with you, they were all generic. They were talking about generic things. But let's say I have a program which works where you want to prepare the students for ceramic industry in Rajasthan. Say that I have a very specific outcome that my students will be capable of working in ceramic industry. Now, saying is not enough. That you say it, you write it, that is not enough. Then you have to map it. What are you doing to achieve that? Curriculum में तो कोई subject है नहीं, या curriculum में हमारे पास एक elective subject है, 2 elective subject है, जो हमें ceramics की properties पढ़ाते हैं, materials के बारे में, उनकी processing पढ़ाते हैं, and how to use them पढ़ाते हैं. So you say that we are offering that subject, or I want to, my students will be very good for automobile industry. Say that okay, मेरे program का एक specific outcome ये है कि मेरे students जो हैं, they'll be very good for employment in automobile industry. But at the same time, you tell them what are you doing for this? How you are saying that my students will be good for industry? What are you doing to make them good for automobile industry? ठीक है जी, हम तो उनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ हमारा MOU है, हम उनको पढ़ाते हैं, वहां पे भेजते हैं, वहां से हम एक्सपर्ट बुलाते हैं, या हम 1-2 इलेक्टिव जो हैं वो देते हैं, या हम प्रोजेक्ट वर्क करवाते हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है. Say that. So under this 3.1 course outcomes, SAR should include course outcomes of one course from each semester of study, however should be prepared for all courses. I'll just explain it what it means. That because you have to fill the SAR and upload it, let us they say you don't make it very heavy, because you have, let's say, 10 into 3, 30 subjects in diploma. He says for 6 semesters you make course outcomes. Course outcomes are subject wise. You say you make course outcomes for each course and load it on the website. Make it part of SAR. But it says you have to prepare as this course outcomes for all the 30 programs, 30 courses, and you should keep these ready for the visit. When the visit comes, when the team comes for the visit, these outcomes, this course outcome should be ready so that the team can see it. But for 6 programs, 6 courses, you should make it and make it a part of the SAR. So this is shows that you write the statements. Then it says COPO matrix for courses. That means which course outcome? If you see on the left side, is it C202.1? That means if you see this, it is C202 is the second course in second year, and 1, 2, 3, N point के बाद जो लिखे हैं, they are the outcome. That means C202.1 is first outcome of the second course in the second year. So what it says,
जो हमने कोर्स आउटकम लिखी है CET 202.1, वो किस पीओ को हमारे मैप कर रही है, किसको कंट्रीब्यूट कर रही है? लेट्स से मैथमेटिक्स का कोर्स है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स है, लेट्स से 202 इज इंजीनियरिंग ड्राइंग, वेयर इट विल हेल्प, विच पीओ? ऐसे PO 9 मैं अज्यूम करता हूं कि मेरी टीम वर्क है, टीम वर्क को तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, प्रोबेबली मुझे ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में कंट्रीब्यूट कर रही है, प्रेजेंटेशन स्किल्स में मुझे कम्युनिकेशन में ये हेल्प कर रही है. सो यू हैव टू मैच, यू हैव टू मैप राइटिंग हाउ इज द रिलेशनशिप, जैसे पहले मैंने कहा स्लाइट, मॉडरेट एंड सब्सटेंशियल. प्रोग्राम लेवल कोर्स PO मैट्रिक्स फॉर ऑल द कोर्सेस. पहले आपने देखा होगा यहां पे था जो C202 पॉइंट भी था आगे, अब ये पॉइंट की बात नहीं कर रही, अब ये कोर्स आउटकम की बात नहीं कर रही, आउटकम वाइज अब कोर्सेज की बात कर रही है कि जो हमने मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ा रहे हैं वो कहां पे हेल्प कर रहा है, किस PO को अटेन करने में हेल्प कर रहा है हमें. तो यू हैव टू फिल दिस, यू हैव टू डेवलप ए कोरिलेशन दैट विच PO, अगर हम उसको प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क किसको, किस PO को हेल्प कर रहा है? टीम वर्क में हेल्प कर रहा है, इंजीनियरिंग नॉलेज में हेल्प कर रहा है, मॉडर्न टूल्स में हेल्प कर रहा है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में हेल्प कर रहा है, प्रोबेबली प्रोजेक्ट वर्क सब में हेल्प कर देगा, आपकी बहुत सारे को कोरिलेट कर देगा. बट नन ऑफ द POs शुड बी लेफ्ट, दैट नन ऑफ द COs इज, कोई भी कोर्स उसको अटेन करने में हेल्प ही नहीं कर रहा है, उसकी तरफ पॉइंट ही नहीं कर रहा, ऐसा कोई PO नहीं होना चाहिए. एक PO को एक से ज्यादा कोर्सेज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट नन ऑफ द PO शुड बी लेफ्ट विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू एनी ऑफ द कोर्सेज. अटेनमेंट ऑफ कोर्स आउटकम्स, दिस इज इंपॉर्टेंट. 40 points. Describe the assessment process used to gather the data upon which the evaluation of course outcome is based. How do you evaluate के कोर्स का आउटकम अटेन हो गई कि नहीं हो गई? कैसे करते हैं? कहां से डाटा आता है? डाटा कहां से आता है? स्पेसिफिक एग्जाम, ट्यूटोरियल क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, लैब टेस्ट, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, इंटरनली डेवलप्ड असेसमेंट एग्जाम्स, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस. ना इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप दोगे कि हम कितनी कितनी वेटेज देते हैं इसको आउटकम के लिए, कि हमने स्पेसिफिक एग्जाम जो है, इंटरनल एग्जाम जो है, उनको हमने 40% दे दिया वेटेज, 10% हमने प्रोजेक्ट को दे दिया, 20% प्रोजेक्ट को दे दिया, असेसमेंट को 5% दे दिया. यू डिफाइन योर ओन क्राइटेरिया. Record the attainments of course outcomes for all courses with respect to set attainment levels. Now course outcome जो हमारे लिखी है कि my student should, let's say I am teaching air conditioning, I say the course outcome is that my students will be able to design a air conditioning system for a given situation. Now when I will be satisfied? I set a attainment level. I say if 70% of my students are able to do it, I am happy. I say the course's outcome is attained. That means I put my own level. I put my own level of assessment. अगर मैंने 70% अटेन हो गया मेरा, मैंने चेक किया कि 70% लोगों ने तो मेरा ठीक ठाक डिजाइन कर दिया, मैंने उनको सिचुएशन दी और उन्होंने डिजाइन कर दिया ऐसी सिस्टम, तो आई एम हैप्पी. बट अगले साल मैं कहूंगा नहीं, अब मेरे 75% स्टूडेंट्स को 70% आने चाहिए, या मैं कहता हूं 70%, पहले मैं 70% स्टूडेंट के 70% आते थे, अब मेरे 70% के 80% आने चाहिए. सो आई इंक्रीज माई टारगेट. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. अगर नहीं हुआ, अगर मैंने देखा मेरे तो 60% बच्चे ही कर रहे हैं, देन व्हाट आई डू, आई रिव्यू माई सिस्टम कि कहां पे मैं फेल हो गया. Why I have not achieved the set level? So that I have to see. The program shall have set course outcome attainment levels for all courses. The attainment level shall be set considering average performance levels in the university examination or any other higher
values set as target for the assessment level. So what I have talked, either you can say कि यूनिवर्सिटी का लेवल तो 70% है, तो मेरे भी 70% तो आना ही चाहिए एवरेज पास परसेंटेज. यहाँ मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का लेवल तो 70 है, आई विल सेट इट 75%. व्हाई नॉट? This I have considered. I have talked to you. I can discuss this. Measuring CO attainment through internal assessment. The example indicates are for reference only. Program may appropriately define levels. It says target may be stated in terms of percentage of students getting more than class average marks or set by a program in each of the associated course outcomes in the assessment instrument. Assessment instruments कौन से हैं? Midterm tests, assignments, mini projects, major projects, reports, presentation as mapped with the COs. Let's say there are two COs. He is talking C202.1, C202.1. Out of the maximum 20 marks for this test, 12 marks are associated with C02.1 and 8 marks are associated with C202.2. Now attainment level 1 is, it says that if 60% students scoring more than 60% marks out of the relevant maximum marks is considered to be attainment of 1, highest level, lowest level. अगर 70% स्टूडेंट्स 60% मार्क्स से ज्यादा ले लेते हैं तो उसको लेवल 2 कहते हैं. दिस इज माय ओन टारगेट. दिस इज द एग्जांपल गिवन. यू कैन हैव योर ओन टारगेट्स. 80% स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 60% marks out of the relevant maximum marks is considered to be attainment level 3. Now you can have a variation in this. You can change this. Attainment is measured in terms of actual percentage of students getting set percentage of marks, what we have defined earlier. The targets are achieved. If the targets are achieved, then the C202.1 and C202.2 are attained for that year. Program is expected to set higher. That means अगर आपका वो 60%, 70%, 80% हो गया तो उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए. अगर टारगेट्स आर नॉट अचीव्ड, द प्रोग्राम शुड पुट इन प्लेस एन एक्शन प्लान. उसको एनालाइज करके उसकी एक्शन प्लान बनाइए कि नेक्स्ट ईयर हम इसको कैसे इंप्रूव करेंगे. कोई जरूरी नहीं है कि आपका इंप्रूव अटेनमेंट हो ही जाए. अगर नहीं हुआ तो उसको इंप्रूव करेंगे, अपने सिस्टम को इंप्रूव करेंगे. वी विल एनालाइज द सिस्टम एंड सी व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव इट. Next is 3.3 is attainment of program outcomes and program specific outcomes. Describe assessment tools and processes used for assessing the attainment of each PO and PSO. जो हमने पहले किया है कि describe assessment tools के किस PO and PSO. PSO is program specific outcomes. उसके लिए क्या क्या हम tools use करते हैं, कैसे हम assess करते हैं. उसके बाद provide results of evaluation of each PO कि क्या actual result क्या आए हमारे, कितनी कितनी अटेन हुई. This is an example. Okay, this presentation is available on NBA website. Total SAR. When you download the SAR, this will be available. You can go through it because I don't find that we will have time for all this. Now we come to criteria 4, which is students' performance. This is all students' performance. If you see this, it talks about student intake. Basically, this criteria is about the students' intake, number of seats filled, students pass out rates. पूरे 3 साल का डिप्लोमा 3 साल में कितने स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स जाते हैं. नाउ दिस इज प्रोग्राम वाइज, दिस इज नॉट द इंस्टीट्यूट वाइज, प्रोग्राम वाइज की बात कर रहे हैं. पहले तो एडमिशन कैसी होती है. अगर एडमिशन आपकी ठीक हो रही है तो बढ़िया एडमिशन बढ़िया मार्क्स, कम एडमिशन कम मार्क्स. अच्छी पास परसेंटेज है, अच्छे बच्चे 3 साल में पास होते हैं. 60 बच्चों का आपने एडमिशन लिया, कितने पास हुए आपके, कितनी परसेंटेज है. 90% पास होते हैं, बढ़िया मार्क्स. 50% पास होते हैं without any reappears. So there are different aspects with different marks for students passing without reappear and students passing
with reap year. Even if students are passing in 3 years, but they had in between some reap years which they have cleared by the time they come to third year, even then you get marks, but this is lesser marks. So this is the data you have to give. It says total number of students admitted through state level counseling, total number of students admitted through institute level quota, number of students admitted through lateral entry in the second year, that means. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल हो गए कितना? ये 3 साल का डाटा चाहिए हमें. Then number of students who have successfully passed without backlog in any of the years. फर्स्ट ईयर में कितने पास हुए? CAY -1, CAY -2, CAY -3, CAY -4, क्योंकि 2 बैच की बात कर रहे हैं हम. Now it is talking about enrollment ratio. Let's see. अगर आपके पास जो AICT approved seats हैं in that program, अगर 90% से ऊपर एडमिशन हो रही है तो 20 out of 20. अगर 80% से ऊपर हो रही है तो 18, 50% हो रही है तो दैट मीन्स अगर ये उल्टा लिखा हुआ है, दिस शुड बी लेस देन 50%. अगर 50% से कम एडमिशन हो रही है तो उसको 0 मार्क्स है. Now the idea here is that this is a self-assessment report. You can do your self-assessment yourself. Then only you decide whether you want to spend money on this or not. तो ऊपर जो डाटा दिया है उससे हमने सक्सेस रेट जो है मल्टीप्लाई कर लिया. आप देखिए यहाँ पे सक्सेस रेट विदाउट बैकलॉग इन एनी ईयर ऑफ द स्टडी, इसके 40 मार्क्स हैं. टोटल सक्सेस रेट वाले के 60 मार्क्स हैं. जो विदाउट बैकलॉग इतने पास हो रहे हैं उसको 40 मार्क्स हैं. जैसे जैसे आपके विदाउट बैकलॉग पास परसेंटेज कम होती जाएगी, आपके मार्क्स कम होते जाएंगे, क्योंकि इट इज 40 इंटू एवरेज सक्सेस इंडेक्स. अगर आपके 100% पास हो रहे हैं, सक्सेस इंडेक्स 1 हो जाएगा तो 40 के 40. अगर आपके 80% हो रहे हैं तो 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर आपके 50% हो रहे हैं तो 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4.22 is number of students who have passed from the program in the stipulated period. पहले हम विदाउट बैकलॉग बात कर रहे थे, यहाँ पे बैकलॉग की बात नहीं की. इसमें क्या कि चलो 3 साल में पास कर गए जितने हैं उसको 20 मार्क्स हैं. एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं उनकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैसे आ रही है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैसे आ रही है, CGPA कैसे आ रहा है, ये उसके मार्क्स हैं. 3 साल का एवरेज है. तो आई नॉट गो इनटू डिटेल. एकेडमिक परफॉर्मेंस इन सेकंड ईयर, वो जो पीछे वाली थी ये पूरे ईयर की है, फाइनल ईयर की है, इस लास्ट में. ये सेकंड ईयर की है, ये पहले नहीं थे, अभी आए हैं परफॉर्मा, नए परफॉर्मा में आए हैं. फर्स्ट ईयर की आ गई. प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज. पहले क्या होता था, जो पुराना परफॉर्मा था उसमें क्या था कि प्लेसमेंट को वो जैसे 1 मार्क्स देते थे, अगर 1 वेटेज देते थे, तो हायर स्टडी को 1.2 देते थे. इस बार आप देखोगे परफॉर्मे में प्लेसमेंट को 1.2 हो गया है, ज्यादा वेटेज हो गई है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन कंपनीज और गवर्नमेंट सेक्टर, कहीं भी प्लेसमेंट हो रही है. इवन अगर अपना कोई अपना काम भी शुरू कर रहा है, इसको भी आप इसमें ले सकते हो. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड टू हायर स्टडीज. ना अब आप कहोगे हमें क्या पता कहाँ हो गए स्टूडेंट्स, हमारे तो कांटेक्ट में नहीं है, हमें तो पता नहीं कि स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली कि नहीं. ये नहीं है, ये आपको रखना पड़ेगा. आपको ये हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स कहाँ हैं. स्टूडेंट्स से इन टच रहिए. आजकल आसान है, सारे बच्चों के पास ईमेल है, तो ईमेल से उन पे टच रहिए और अपना जो भी आप क्लेम कर रहे हैं कि इतने स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो गई है, उनका आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा. प्रोफेशनल एक्टिविटीज, स्टूडेंट चैप्टर्स, टेक्निकल इवेंट्स. आप कोई
टेक्निकल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो, उसके मार्क्स हैं। प्रोफेशनल स्टडीज है, IST का चैप्टर है, ASME है, कोई स्टूडेंट चैप्टर है, लोकल चैप्टर अपने बना लीजिए, स्टूडेंट्स के चैप्टर। अपना एयर कंडीशनिंग का टीचर है, वो चैप्टर बनाएगा, एयर कंडीशनिंग चैप्टर फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। प्रोफेशनल स्टडीज, स्टूडेंट चैप्टर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग टेक्निकल इवेंट्स, ये दोनों तकरीबन ओवरलैप कर रहे हैं। क्राइटेरिया 5, नाउ दैट वाज द स्टूडेंट क्राइटेरिया, एवरीथिंग अबाउट स्टूडेंट्स, उनकी एडमिशन, उनकी प्लेसमेंट, उनके रिजल्ट्स, उनका एवरेज एकेडमिक परफॉर्मेंस, जिसमें मार्क्स की बात कर रहे हैं कि एवरेज एकेडमिक परफॉर्मेंस का 70% मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, 60% आ रहे हैं, 40% आ रहे हैं। क्राइटेरिया 5 इज अबाउट द फैकल्टी। एवरीथिंग अबाउट फैकल्टी, एवरीथिंग मीन्स पहले तो फैकल्टी आपके पास है कि नहीं है। एक यहां पे जो प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं कि AICTE के हिसाब से 1:20 रेशियो होनी चाहिए इन डिप्लोमा प्रोग्राम्स। फॉर एवरी 20 स्टूडेंट देयर शुड बी 1 टीचर। सो आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से जब हम बात करते हैं, यहां पे जो इश्यू आता है वो आता है कि कौन से स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम। स्टूडेंट्स ऑन रोल की बात कर रहे हैं, एक्चुअल एडमिशन की बात कर रहे हैं, या हम अप्रूव्ड इनटेक की बात कर रहे हैं। यहां पे जो फैकल्टी रिक्वायरमेंट है वो अप्रूव्ड इनटेक की बात करते हैं हम। अगर 60 की आपके पास अप्रूवल है कि 60 सीटें हैं मैकेनिकल में, तो हम 60 की बात कर रहे हैं यहां पे। उसके लिए 60 डिवाइडेड बाई 3 या 60 के 3 हो गए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 180 स्टूडेंट्स हो गए आपके कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो 180 डिवाइड बाई 9 डिवाइडेड 20, 9 टीचर चाहिए आपको वहां पे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास तो 100 की एडमिशन है, 180 में से हम तो 5 टीचर रखेंगे, नहीं। जो टीचर की रिक्वायरमेंट है वो 9 है। जो NBA देखेगा वो 9 की डिमांड करेगा। इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी, क्वालिफिकेशन ऑफ फैकल्टी, एक तो क्वालिफाइड होनी चाहिए सारी। अगर AICTE कहती है कि मास्टर्स होना चाहिए तो मास्टर्स ही होने चाहिए डिप्लोमा में टीचर्स। रिटेंशन की बात कर रही है, आप ज्यादा लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से हैं तो यहां पे रिटेंशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटेंशन की प्रॉब्लम आई है ज्यादा सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ से, क्योंकि वहां पे इसका पीछे आइडिया ये है कि अगर आपके टीचर आपके पास रहते हैं, आपको टीचर छोड़ के नहीं जाते फटाफट, इसका मतलब अगर इंस्टीट्यूट इज गुड, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द फैकल्टी। अगर रिटेंशन लेवल ही नहीं है, एक साल के बाद छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द रिटेंशन पॉलिसीज, विद द फैकल्टी पॉलिसीज। पब्लिकेशन की बात करते हैं यहां पे। अभी तो ज्यादा फैकल्टी मास्टर्स है तो पब्लिकेशन की बात भी होनी चाहिए, पब्लिकेशन के मार्क्स भी हैं। मैं अभी इसको क्विकली वील गो थ्रू इट। स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ HOD। HOD कहते हैं AISD वांट्स के HOD जो है इन एडिशन टू 1:20 की रेशियो बात करते हैं हम। पहले क्या करते थे, जो अब तक जो SAR थे उसमें क्या था कि ओनली रेगुलर फैकल्टी वाज टेकन इनटू अकाउंट। अभी इन्होंने एक थोड़ी सी चेंज कर दी है। आप देखिए, A is total number of full-time regular faculty serving fully to all years of this program. B is total number of full-time equivalent regular faculty. Now what is this equivalent? Equivalent regular faculty is basically the faculty which is paid minimum salary as per the government, उससे कम नहीं। गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट आपको कहती है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी नॉर्म्स निकालती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिटेक्निक है, उसमें कहेंगे कि हम जो कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी रखेंगे उसको 30,000 रुपए देंगे। अगर प्राइवेट पॉलिटेक्निक वाला भी 30,000 देता है उसको, तभी उसको फैकल्टी काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं। इसमें देख लीजिए, फुल टाइम ऑन रेगुलर फैकल्टी ये है
full time on roll with the prescribed pay scale, a employee on contract for a period of not less than 2 years and देखिए कैपिटल में है, and drawing consolidated salary equal to or more than applicable gross salary shall be counted as a regular employee. अगर स्टेटमेंट गवर्नमेंट कहती है कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल को 20,000 देंगे तो हम ठीक है, एनबीए 20,000 एक्सेप्ट करेगी। सो इससे आपकी स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो निकल आएगी। फैकल्टी क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। इट सेज फैकल्टी क्वालिफिकेशन जो स्कोर है 20 मार्क्स है इसके लिए, उसके लिए फार्मूला दिया हुआ है। ये 4 और 5 दोनों जो क्राइटेरिया है फार्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने ऑनेस्टली भरा है आपका एसएआर और आपने कैलकुलेट कर लिया है तो आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स मिल रहे हैं। कहीं कहीं पे थोड़ी सब्जेक्टिविटी होती है, बट इसमें 4 और 5 में कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है। आप देखिए फैकल्टी विद एमटेक को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपके स्कोर के लिए, वेयर एज फैकल्टी विद बीटेक इज मल्टीप्लाइड बाई 7, तो उसकी वेटेज कम हो गई है। और नीचे टेबल दिया हुआ है। ओके, दिस इज कैलकुलेशन। 5.3 इज फैकल्टी रिटेंशन, 90% ऑफ द रिक्वायर्ड फैकल्टी रिटेन्ड। 2 साल से ऊपर हैं तो ए मार्क्स मिलते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद अपने आप। इसमें भी जो लास्ट लाइन है गलत है, इसको लेस देन 50% होना चाहिए। Faculty as participants in faculty development training activities 30 marks। 2 बेनिफिट है, आपको मार्क्स मिल रहे हैं, आपकी फैकल्टी अपग्रेड हो रही है। सो सेंड देम फॉर ट्रेनिंग। इसका भी फार्मूला बेस्ड है, नॉट डिफिकल्ट, यू कैन सी इट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, टेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स 20 मार्क्स हैं। फैकल्टी को इट शुड बी इन्वॉल्व इन कंसल्टेंसी वर्क्स। कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टी का लिए, कोई जैसे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत टेस्टिंग होती है, वो टेस्टिंग ले लीजिए। मशीनें हैं हमारे पास खड़ी हैं। 5.6 इज फैकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड डेवलपमेंट सिस्टम। हमारे पास गवर्नमेंट में तो अप्रेजल है तो यू गेट फुल मार्क्स है, सारा कुछ भरते भी हैं। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उनको भी अपना एसीआर की जब हम बात करते हैं वो होना चाहिए। उसके बाद डेवलपमेंट सिस्टम का अगर कुछ गड़बड़ हो रही है या उनके पास कोई आपको क्यूआई पे भेजने की प्रोविजन है तो इसमें गवर्नमेंट वालों को तो मार्क्स मिल जाते हैं सारे ही, क्योंकि गवर्नमेंट का क्यूआईपी सिस्टम भी है, गवर्नमेंट का अप्रेजल सिस्टम भी है, गवर्नमेंट में कन्वे भी होते हैं एडवर्सल मार्क्स, तो इसमें आपको मिल जाते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ कैरियर एडवांसमेंट स्कीम, गुड फॉर वी टीचर्स, कि अगर इंप्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तो उनको मार्क्स मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द इंप्लीमेंटेशन। Criteria 6, facilities and technical support. It talks about the physical facilities, labs की क्वालिटी कैसे है, टेक्निकल मैन पावर है, क्वालिफाइड मैन पावर है कि नहीं है। टेक्निकल मैन पावर को आप कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजते हो, उनकी बात करता है। आप देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स टू मीट द करिकुलम रिक्वायरमेंट्स। क्लासरूम है आपके पास, बढ़िया क्लासरूम है, फर्नीचर है, लाइटेड है, प्रॉपर लाइट है, प्रोजेक्टर्स हैं, ब्लैक बोर्ड है अच्छा कि नहीं है, एम्बियंस कैसी है, सफाई सुई होती है कि नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट वेल इक्विप्ड वर्कशॉप्स टू मीट द करिकुलम रिक्वायरमेंट्स। एज पर करिकुलम जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए वर्कशॉप आपके पास जो है, बेसिक वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, वो है कि नहीं है। 6.3 एडिक्वेट एंड वेल इक्विप्ड लैब्स एंड टेक्निकल मैन पावर। पहले 2 जो हैं क्लासरूम्स और वर्कशॉप की जो कॉमन फैसिलिटी है उनकी बात हो गई। इसमें अब आपके प्रोग्राम की बात हो रही है ज्यादा। नेम ऑफ द लैब, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर सेटअप, दैट मींस यू सी देयर आर सम ब्रांचेस, जैसे मैकेनिकल ब्रांच में है उसमें एक टेंसाइल टेस्टिंग मशीन होती है, वो तो एक ही है, उसमें आपको वरी नहीं करना चाहिए। बट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने हैं, जैसे मैं कहता हूं आपको ओम्स लॉ वेरीफाई करना, उसके अगर आप कहेंगे कि 20 स्टूडेंट्स आएंगे मेरे एक ही पे करेंगे तो वो तो छोटी सी इक्विपमेंट है, उसको तो हमें वी शुड हैव मोर सेटअप्स। नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट, वीकली यूटिलाइजेशन स्टेटस कि कितना की यूटिलाइज करते हो, टाइम टेबल के हिसाब से दे दीजिए। टाइम टेबल आपका जो है इट शुड बी एज पर दी बोर्ड रिक्वायरमेंट जो एलटीपी आपको दिए हैं।
नेम ऑफ द टेक्निकल यूटिलाइजेशन स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए। ये अगर इसमें थोड़ी सी गलती है तो मेरी गलती नहीं है, एनबीए का परफॉर्मा है। डेजिग्नेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, टेक्निकल मैन पावर दी। एडिशनल फैसिलिटीज क्रिएटेड फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्या क्या लैब्स में हमने एडिशनल लगाया पहले। कोई जरूरी नहीं है कि आपने बाहर से ही खरीदना है, आप इंटरनली बच्चों से भी डेवलप करा सकते हैं। बच्चों के जो प्रोजेक्ट हैं ऐसे दे सकते हो कि उसको आपके लैब के फैसिलिटीज को ऑगमेंट करें, ये आपको भरना है। मेंटेनेंस एंड ओवरऑल एम्बियंस, इसकी मैं बात कर रहा हूं कि मेंटेनेंस है आपके पास। इसमें एक और बहुत जरूरी चीज होती है, आप रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हो। गवर्नमेंट में तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस का सिस्टम है, प्राइवेट में नहीं होता। उनका रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती कि कंज्यूमेबल आपने कब खरीदे, रॉ मटेरियल कितना खरीदा, कब आया, कब कैसे इश्यू हुआ, कब कंज्यूम हुआ, वो सारा रिकॉर्ड उसमें अपडेटेड होना चाहिए। एंड इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड, इट शुड नॉट बी लेफ्ट टू द टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन। आपको फैकल्टी का जो इंचार्ज है उसको ऑथेंटिकेट करना है, उसको वैलिडेट करना है कि हाँ भाई ये 500 ग्राम यूज हो गया, बाकी कितना हो गया, कितना रह गया। अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग फैसिलिटी इन द डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द कंप्यूटर, नंबर ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनल्स, स्टूडेंट कंप्यूटर रेशियो। जैसे हमारी इंजीनियरिंग में कहते हैं हम 6:1 कंप्यूटर रेशियो होनी चाहिए। पर अगर आपके पास 60 स्टूडेंट्स हैं तो 10 कंप्यूटर होने चाहिए। सॉफ्टवेयर उनके पास जो रिक्वायर्ड है तो होने चाहिए, वो तो रिक्वायरमेंट है। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक डिपार्टमेंट खरीदेगा सॉफ्टवेयर। नेटवर्क बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वो एक जगह कंप्यूटर में अगर लिख के हमने लगा दिया, इट इज शेयरेबल। अगर शेयर कर रहे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंटर्स, जितने आपके कंप्यूटर है उसका 10वां हिस्सा प्रिंटर भी होने चाहिए, जो बच्चों को अवेलेबल होने चाहिए। इसमें एक बात होती है जो ठीक नहीं है, वो है कि आपने के पास 50 कंप्यूटर हैं, उसमें 10 कंप्यूटर ने आप तो फैकल्टी को दे दिए 15, बच्चों के लिए तो बच गए 40। ये नहीं है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कुछ आपने अकाउंट्स में लगा दिए, कुछ प्रिंसिपल के ऑफिस में लगा दिया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यहां पे जो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं वो सिर्फ जो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, उनकी बात कर रहे हैं। लैंग्वेज लैब, लैंग्वेज लैब आपके पास है कि नहीं है, एआईसीटी ने कंपलसरी किया हुआ है। आप कहते हो मेरे सिलेबस में नहीं है, बट सिलेबस में नहीं है तब भी गो बियॉन्ड सिलेबस एंड हैव ए लैंग्वेज लैब। उसमें सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसमें कंप्यूटर होने चाहिए, उसमें सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। So this was criteria 6. Criteria 7 is actually there is no information from your side to be filled in this. It is based on the previous criteria only. जो 2, 3, 4, 5, 6 क्राइटेरिया है ये उसी पे बेस्ड है। एक्शन फर्स्ट आप देखिए 7.1, एक्शन टेकन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ईच ऑफ द पीईओज एंड पीएसओ। पीईओ पीएसओ आपने इवैल्यूएट किए, उसका एक्शन भी वहां पे लिखा हमने, और वही यहां पे फिर वापस लेके आना है कि हमारा एयर कंडीशनिंग में हमारा जो था अटेनमेंट लेवल कम आ रहा था, उसके लिए हमने क्या किया, टीचर को ट्रेनिंग पे भेजा, थोड़ा सा इक्विपमेंट और खरीदा, और बच्चों को हमने प्रोजेक्ट देने से अच्छे शुरू किए। तो यहाँ पे लिस्ट करेंगे। आप देखिए एक सैंपल 1 नीचे पढ़िए, कोर्स आउटकम्स फॉर लेबोरेटरी कोर्सेज डिड नॉट मेजर अप एंड एज सम ऑफ द लैब इक्विपमेंट डिड नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू डू द नीडफुल। दैट मींस single trace oscilloscope available where dual trace would have been better, or non-availability of some important sports software. Now what is the action taken? Action हमने क्या किया कि सिंगल ट्रेस ऑसिलोस्कोप की जगह पे हमने डबल स्पेस ट्रेस कर दिया। या मेरे पास एक एयर कंडीशनिंग रिग नहीं था जो एसी को टेस्ट कर सकता, जो कंप्रेसर को टेस्ट करता अलग से, तो मैंने वो यहाँ पे एक रिग लगा लिया बना के, तो एक्शन टेकन हो गया। या आप इसको पढ़िए सेकंड को, in a course on electromagnetic theory sufficient student performance has been considerably low with reference to some COs. course outcomes meet नहीं हो रही थी। क्यों नहीं मीट हो रही थी? वो शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाले का प्रोग्राम टीचर का कोई फॉल्ट नहीं था, वो तो पढ़ा रहा था बेचारा, बहुत मेहनत कर रहा था, बट जो बच्चों का मैथमेटिक्स का बेस था जो पहले पढ़ के आए थे वो उनको ठीक नहीं आ रहा था, वेक्टर कैलकुलस ठीक नहीं पढ़ा था उन्होंने। तो हमने क्या किया कि ठीक है थोड़ा सा वेक्टर कैलकुलस पे जोर दे दिया पहले सेमेस्टर में। उसके बाद क्या हुआ, हमारा ईएम थ्योरी में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बेटर हो गई।
Okay, similarly you have to go through this. Improvement in success rate, nothing to be फील्ड न्यू. जो सक्सेस इंडेक्स था पहले कि पिछले साल में कितना था, उससे साल में कितना, कौन सा बैच में, लेटेस्ट पासिंग बैच -1, लेटेस्ट पासिंग बैच -2. सो ये अपने आप पीछे से डाटा अपने आप आपको उठा के लगाना है कि पहले हमारे 71% पास हो रहे थे, उसके बाद -1 में 72 हो गए, 73 हो गए, और उसके बाद हमारे 75 हो गए. यहां पे क्या प्रॉब्लम आती है कई बार कि ये जो कर्व है अगर ड्रॉ करें, ये असेंडिंग कवर होना चाहिए, ऊपर को जाना चाहिए, मतलब इंप्रूवमेंट होनी चाहिए पास आउट में. कई बार होता है कि आपके पहले 90% पास हो रहे थे, 92% पास हो रहे थे, अगले बार में क्या हुआ, 92 से 91 हो गया. नथिंग, कोई जरूरी नहीं है कि अब आपका पहले ही बड़ा अच्छा है, 95% पहले ही पास हो रहे हैं, उसके बाद 94 हो गया, उसके लिए आपको पेनलाइज नहीं होना चाहिए. बट द ओनली थिंग विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इज कि आपने एक्शन क्या लिया उस पर, आपने उसको एनालिसिस किया कि क्यों हो गया और क्या एक्शन लिया उसके ऊपर. पास आउट रेट तो नीचे हो गया था, जो हो गया उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर क्या कर सकते हैं, उसको एनालिसिस करके उस पर एक्शन ले सकते हैं कि इस बार हमने टीचर चेंज किया था, प्रोबेबली उस टीचर को ठीक से सब्जेक्ट नहीं आता था, उसको हमने ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, या उस टीचर को हमने वो सब्जेक्ट दे दिया जो उसको आता था, यहां पे दूसरा टीचर लगा दिया. 7.3 इज इंप्रूवमेंट इन प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज. फिर पीछे से डाटा आएगा. अब ये एक सीरियस पॉइंट इसमें ये आता है कि अलर्ट से आपके पास आ गई टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस वाले आपके कंप्यूटर के बच्चे ले गए. इस बार आपके 50 बच्चे बैठे, उसमें से 20 ले गए वो इंटरव्यू से. बट नेक्स्ट ईयर टीसीएस सेज वी विल नॉट कम, आपके पास नहीं आएंगे हम प्लेसमेंट के लिए. ये सीरियस है. ये सीरियस इसलिए है कि अगर टीसीएस आपके बच्चे ले गई थी और नेक्स्ट ईयर कहते हैं कि हम नहीं आएंगे, तो इसका मतलब आपके बच्चों ने परफॉर्म नहीं किया, वहां पे आपके बच्चों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया उस इंस्टीट्यूट में. तो उसको एनालाइज करना जरूरी है, उसको एनालाइज करिए. सो लिस्ट दी स्टेप्स टेकन, कि आपने क्या किया उसको देखने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए. ये क्या आ रहा है ऊपर, ठीक. सो we have to put it there, that means there is nothing new data coming, but action taken can be there कि हमने ये एक्शन लिया इसके ऊपर. एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर सिमिलरली, क्या आपने कभी इंटरनल एकेडमिक ऑडिट किया इन बिटवीन कि कहां पे हम फेल होने वाले हैं, कहां पे हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है. 7.6 is never new facility created in the program in the last 3 years. क्या कोई नई इक्विपमेंट खरीदी, कोई नया सेटअप क्रिएट किया, नए एक्सपेरिमेंट सेटअप किए, that will come here and it has 10 marks. जो हमारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि हमारा तो अभी पहला साल ही है, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है ये. दे कैन कीप एडिंग. जिनको अभी आज ही अप्लाई करना है, उनके पास तो टाइम ही नहीं है कि पिछले 3 साल में चले जाएंगे. कैसे चले जाएंगे पीछे वो, CAY -2 कैसे जाएंगे वो. बट जो आज स्टार्ट कर रहा है उसको 3 साल बाद अप्लाई करना है. He should start working on this. He should start implementing this. Criteria 8 is student support system, 50 marks. इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स का पर्सनली आप कितना ध्यान रखते हो, कि स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल लाइफ की प्रॉब्लम्स है, उनको क्या आप केटर करते हो कि नहीं करते. कि हमारा सिर्फ काम है कि आए, क्लास ली और खत्म, उसके बाद स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू एंटर योर डिपार्टमेंट और योर रूम. डू यू हैव ए मेंटरिंग सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम है. बहुत सारे बच्चों को, बेचारों को पता ही नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड ऐसी होती है कि उनको पता ही नहीं कि हम डिप्लोमा के बाद क्या कर सकते हैं, हम डिग्री कर सकते हैं, हम नौकरी कर सकते हैं, हम बाहर जा सकते हैं, हम कौन सा एग्जाम दे सकते हैं. अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. तो हैव ए सिस्टम ऑफ मेंटरिंग सिस्टम शुरू करिए अपने इंस्टीट्यूट में. एंड अलॉट लेट्स से 20 स्टूडेंट्स टू ईच मेंटर. जब 1:20 की रेशियो है फैकल्टी की, तो आपके पास 1:20 के हिसाब से फैकल्टी होनी चाहिए, और आप उनको 20-20 का मेंटर बना दीजिए, हु विल
be in constantly touch with the students. उसके बाद सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा, उसके बाद सेशन के मार्क्स भी आएंगे, उसके बाद पिछले साल का सेमेस्टर का रिजल्ट भी आएगा, एंड ही विल बी एबल टू टॉक टू देयर पेरेंट्स आल्सो कि आपका बच्चा यहां पे प्रॉब्लम है। ये सारा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए सिस्टम। फीडबैक एनालिसिस एंड रिवार्ड करेक्टिव मेजर्स टेकन। फीडबैक तो आप लेते हैं, कोई करेक्टिव मेजर्स भी लीक नहीं की, फीडबैक लेनी शुरू करिए अभी से अगर नहीं ले रहे तो। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल बिकॉज इट इज ऑल गिवन हियर। फीडबैक ऑन फैसिलिटीज, ये स्टूडेंट से फीडबैक लीजिए। असेसमेंट इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट फीडबैक कलेक्शन एनालिसिस एंड करेक्टिव एक्शन। स्टूडेंट्स कहते हैं हमारी कैंटीन खराब थी भैया, ठीक है पढ़ाई तो ठीक है, कैंटीन में बैठने के लिए मेरे पास साफ जगह नहीं है, तो कुछ एक्शन लिया। कैरियर गाइडेंस, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, फिर वहीं पे आ गए हम कि कैरियर गाइडेंस है, ट्रेनिंग कोई होती है बाहर भेजते हो कि नहीं, प्लेसमेंट कैसी है। एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कुछ बात करते हैं हम, कोई कैंप कुंप लगाते हैं, कोई प्रोफेसर, कोई जरूरी नहीं है कि हम आपका एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर नया प्रोफेसर लगाएंगे, किसी प्रोफेसर को चार्ज देके हम कर सकते हैं। सो दिस इज एज फार एज criteria 8 is concerned. Now criteria 9, again ये एकेडमिक से क्राइटेरिया 8 एंड 9 जो है दोनों प्रोग्राम लेवल के नहीं है, डिपार्टमेंट लेवल के भी नहीं है, ये इंस्टीट्यूट लेवल के हैं। आपने देखा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें सिर्फ बजट के सिवा इसमें सारी बजट की भी बात करते हैं क्राइटेरिया 9 में। गवर्नेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं आती गवर्नमेंट में, बिकॉज़ वी आर डिफाइंड, बट सेल्फ फाइनेंसिंग में जो स्पेशली जो सेल्फ फाइनेंसिंग आए हैं पॉलिटेक्निक्स, उनमें इसकी प्रॉब्लम आती है। इसमें पहले स्टेट द विजन एंड मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट हमने कर लिया है पहले। गवर्निंग बॉडी का कंपोजिशन क्या है, क्या घर की गवर्निंग बॉडी बनाई हुई है, क्या स्टैट्यूटरी बॉडीज डीटी का आदमी है उसमें रिप्रेजेंटेटिव, एआईसीटी का रिप्रेजेंटेटिव है, कोई इंडस्ट्री से भी है कि नहीं है, क्या उसकी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होती है, मीटिंग में कैसी चीजें डिस्कस करते हैं, उसमें इंस्टीट्यूशन की बातें करते हैं कि नहीं करते, क्या क्या और बॉडीज हैं आपके पास, एकेडमिक बॉडी है कोई, एकेडमिक अफेयर्स की बॉडी है कोई, स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए कोई बॉडीज हैं कि नहीं है, स्पेशली रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसीज, रिक्रूटमेंट कैसे करते हो आप, जो आता है उसी को रख लेती है मैनेजमेंट या कोई प्रॉपर कंस्टिट्यूट होती है कमेटी। गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम नहीं आती, प्रमोशनल पॉलिसीज की भी नहीं आती। सेल्फ फाइनेंसिंग में ये इशू होता है कि आपके पास रिक्रूटमेंट कैसे हो रही है, आपकी प्रमोशनल पॉलिसीज क्या है, डॉक्यूमेंटेड है। नंबर 1 इज डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए जो एम्प्लॉई है, एंड इट शुड बी इंप्लीमेंटेड आल्सो। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बुकलेट बना के छोड़ दी और इंप्लीमेंट नहीं हो रही। एंड बहुत जगह पे हम पॉलिटेक्निक बहुत कम गए हैं इसके लिए, एक्रेडिटेशन के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में हम जाते हैं, जब मैनेजमेंट के पास जाते हैं एक बहुत बढ़िया सी बुकलेट निकाल के देते हैं कि ये हमारी प्रमोशनल पॉलिसीज हैं, ऐसे ऐसे प्रमोट करते हैं हम, ऐसे हम बच्चों को, हम टीचर को अवार्ड करते हैं। गवर्नमेंट में तो नहीं अवार्ड कर सकते कि आप वो मॉनिटरी बेनिफिट देते हैं कि ठीक है जी आपका एक पेपर प्रेजेंट होगा तो उसको आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, ऐसे करते हैं। वो लिखा होता है बट फैकल्टी जो है उसको पता ही नहीं होता क्या है नहीं। तो इसमें यह है कि फैकल्टी शुड नो ऑल दिस, व्हाट आर दी पॉलिसीज विच आर इफेक्टिंग दैम। डिसेंट्रलाइज इन वर्किंग एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल, कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है बोथ फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द टीचर्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी जो है सेट रूल्स हैं, बट प्राइवेट में जैसे इवन प्रिंसिपल डजंट हैव एनी पावर टू स्पेंड मनी, उसकी बात करते हैं। कई बार तो मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं कि छुट्टी वाली, लेक्चरर की छुट्टी, क्लर्क की छुट्टी भी हमारे पास ही आएगी, चेयरमैन के पास, उसकी बात करते हैं कि रूल्स क्या हैं आपके। ट्रांसपेरेंसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन, कि आपका वेबसाइट होना चाहिए जिसके ऊपर आपके इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए लोगों को।
9.2 is budget allocation, utilization and public accounting at the institute. कितना बजट एलोकेट हो रहा है आपको? 1 is for the salary, 2nd is for the day to day running of the institute. डिपार्टमेंट को मेंटेनेंस के लिए, कंज्यूमेबल के लिए कितना बजट है, इक्विपमेंट परचेज के लिए कितना बजट है. इंस्टीट्यूट के पास बजट आ गया 2 करोड़ रुपए. हाउ यू एलोकेट टू द डिफरेंट प्रोग्राम्स. डिपार्टमेंट ही प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम है तो डिपार्टमेंट प्रोग्राम एक ही बन जाते हैं. नहीं तो अगर डिपार्टमेंट 2 चला रही है प्रोग्राम तो आगे कैसे एलोकेट होता है, कितना एलोकेट हुआ, कितना खर्चा हुआ, इसका सारे का हिसाब इसमें देना पड़ता है हमें. ये तो टोटल सोर्स है. ये खर्चा कैसे कहां पे हुआ इन करंट फाइनेंशियल ईयर, CF वाइज करंट फाइनेंशियल ईयर, कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने पैसे लगे, लाइब्रेरी पे कितने बजट किया है और कितना खर्च हुआ. आप देखिए पहले 2-3 कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. लेबोरेटरी कंज्यूमेबल कितना हुआ, एलोकेट कितना हुआ और कितना आपको खर्चा किया. ये टिल इसलिए लिखा हुआ जिस दिन हमने फाइल की उस दिन की बात कर सकते हैं, जिस दिन आपने रिपोर्ट फाइल की. एडिक्वेसी ऑफ बजट एलोकेशन, ये कमेटी देखेगी. कमेटी ने देखना कि आपको यार इसके अंदर कंज्यूमेबल के लिए तो आपको 5,000 ही मिले साल में, तो क्या 5,000 में क्या कंज्यूमेबल ले लोगे आप डिपार्टमेंट में. उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ एलोकेटेड फंड, हमने एलोकेट तो कर दिया कि आपको 5 करोड़ मिले, आपने यूज कितना किया. ये 9.2 जो है इंस्टीट्यूट लेवल की बात कर रहे हैं. 9.3 प्रोग्राम स्पेसिफिक बजट एलोकेशन की बात कर रहे हैं कि आपको कितना पैसे मिले. सेम ही है. उसके बाद जनरल फैसिलिटीज है, लाइब्रेरी एंड इंटरनेट. एक आगे लाइन पड़ी है 9.4 के अंदर. इट इज अज्यूम्ड दैट जीरो डेफिशिएंसी रिपोर्ट वाज रिसीव्ड फ्रॉम बाय द इंस्टीट्यूशन, इफेक्टिव अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन टू बी डेमोंस्ट्रेटेड. लाइब्रेरी होनी चाहिए एज पर AICTE नॉर्म्स. आपके पास बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए, कुछ इंटरनेट अपने जर्नल्स होने चाहिए, ई बुक्स की भी प्रोविजन होनी चाहिए, इंटरनेट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए. वो AICTE के जो अप्रूवल मैनुअल है उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स हैं. NBA जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट AICTE की मान के चलती है. क्वालिटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, कैसी बुक्स हैं, कोई लोकल बुक्स ही हैं, कोई अच्छी बुक्स भी आपने रखी हुई हैं. एक जगह हम इस कॉलेज में गए, बुक्स रखी हुई हैं, बढ़िया बुक्स भी खरीदी हुई हैं, बट वो कभी इशू नहीं हुई. ना कभी किसी टीचर ने इशू कराई, ना कभी स्टूडेंट ने इशू कराई. तो हम सोच रहे कि स्टूडेंट से तभी इशू कराएंगे अगर पहले टीचर इशू करवाएंगे. - 9.42 इज इंटरनेट, डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. 9.5 इज इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट. कभी आपने कम्युनिटी के बारे में सोचा बाहर? क्या आपके पास बहुत बढ़िया वर्कशॉप है, आपके पास वेल्डिंग शॉप है, कभी आपने चला कहा कि लोकल बच्चों को एक कोर्स ही करवा दें, चलो कि वेल्डिंग में उनका एक्सपर्टाइज हो जाए, उनको अपना काम शुरू कर लेंगे, कहीं नौकरी मिल जाएगी. वी हैव रिसोर्सेज अवेलेबल. तो उसके लिए भी 5 मार्क्स दिए हैं. So this is all the 9 criterias available to us, and we are just in time. As I said, the total marks are allocated are 1,750 आपको मिलते हैं, तो आपको 5 साल की एक्रेडिटेशन मिलती है. 600 और प्लस मोर देन 600 एंड लेस देन 750 2 साल की, इसको प्रोविजनल एक्रेडिटेशन कहते हैं. And less than 600 you don't get accreditation. So this is all from my side. As far as all the 9 criteria are concerned, I will give you my email address and phone number. You can any time you can write to me. I'll reply. Okay.
This is my email, pablabs@nittrcd.ac.in, 9815951921. Any principal, any staff member, they are welcome to contact me. So if you have any questions, you are welcome to ask, please. क्या कोई क्वेश्चन है? Thanks, sir, for your nice information given to us, sir. Well, friends, we will meet at 2 o'clock, and as per your request, I have asked the next speaker to be very brief and make you free by 3 o'clock, so that you can go to your places. And from my side, I wish you a very happy 2016. Thank you. बंद हो गया? Happy New Year, sir. O'clock sharp and finish by 3 o'clock, so that you can go home early. Okay, sir. Thank you. Thank you. Happy New Year, sir. आपने ले लिया ना?
हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? सब बढ़िया है सर। सर आ गए, पार्टिसिपेंट आ गए? हाँ सर आ गए, कुछ आ रहे हैं सर। ओके, आगे आ जाओ सर आप। हैं? हाँ, ये पार्टिसिपेंट आ गए सर। ओके, तो सबसे पहले आपको सबको नए साल की मुबारक हो और आप खुश रहें, तरक्की करें और सेहतमंद रहें। आपको भी सर। तो जैसा कि कल भी और आज भी आप लोगों के साथ पावला साहब ने एनबीए के बारे में बात की और मैंने और सैनी साहब ने कुछ एनएसक्यूएफ के बारे में बात की। आज हम अलाइनिंग करिकुलम और डिप्लोमा प्रोग्राम विद एनएसक्यूएफ बात करेंगे, लेकिन जैसा मुझे पावला साहब ने बताया कि आप लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी आपको समय मिल सके उतनी जल्दी जाना चाहते हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके खत्म करें। देखें, अगर बैठ गए हैं तो मुझे अगर दिखाइएगा जरा पार्टिसिपेंट को। मेरे ख्याल से पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं। ओके, तो शुड आई स्टार्ट नाउ? देखिए, क्योंकि टाइम कम है तो मैं सारा चीज नहीं कवर करूंगा ही, ना ही एक्सरसाइज करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको बातचीत करें। आप लोग सब लोग टीचर हैं और आप लोग जानते हैं कि करिकुलम जो है डिप्लोमा प्रोग्राम का होता है और करिकुलम में वही चीजें होती हैं जो कि हम बच्चों को जिसके एक्सपीरियंस देना चाहते हैं 3 साल में, जिससे कि वो जो है उसमें जो गोल ऑफ एजुकेशन है वो पूरे हो जाए। अब जो पहले दिन हमने बात किया गोल ऑफ एजुकेशन क्या है, गोल ऑफ एजुकेशन हमने 4-5 चीजों में बताए कि गोल ऑफ एजुकेशन पहला है प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर मेकिंग present developing present for meeting present and future need, personal development, social development, learning to learn skill development, creativity and innovation development, and value development in students. जो आपका सारा करिकुलम जो बनाया हुआ है पॉलिटेक्निक्स में जो है उसका बेसिस यही है कि ये जो गोल ऑफ एजुकेशन है इनको पूरा किया जाए। अगर आप लोग जो करिकुलम हमारा डिप्लोमा का है उसको आप देखें तो आपको नजर आएगा कि करिकुलम में कुछ मेन ब्रॉड एरियाज हैं जिनके कि उसमें बच्चों को एक्सपीरियंस देते हैं और उन सबको हम इन भागों में डिवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, एनसीसी, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज के हैं, ये एक पार्ट है। दूसरा जो ब्रॉड एरिया है वो है बेसिक साइंसेस एंड बेसिक स्किल्स का, जिसमें कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर लिटरेसी वगैरह आता है। फिर आपने देखा है कि इंजीनियरिंग साइंसेस कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एटसेट्रा, जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि बेसिक साइंसेस के नहीं हैं, इनकी अप्लाइड साइंसेस के हैं जो कि इंजीनियरिंग का पार्ट है। फिर उसके बाद आपको बताया कि भी प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं, कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं और कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है और प्रोजेक्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल सब्जेक्ट।
और इन सब का ये जो कंपोनेंट्स करिकुलम के हैं, ये इनके कुछ रेशो जो है हमने जो है AICTE ने अपने नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स में दे रखी है, और जो लोग भी करिकुलम डिजाइन करते हैं या रिवाइज करते हैं उन नॉर्म्स को ख्याल में रखते हैं। सो करिकुलम इज ए डॉक्यूमेंट, और इसके ये जो डॉक्यूमेंट है इसके कई चीजें हैं, वो मैं बात नहीं करूंगा। कल हमने ये बात की कि ये जो ये ऑक्यूपेशन लेवल्स इन इंडस्ट्री के हैं उनके 10 हमने हम कहा कि 10 लेवल हैं जो कि इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं। उनमें 10 सबसे ज्यादा है, 9 उससे नीचे का है, 8 का नीचे उससे है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। 10 को हमने कह दिया स्पेशलिस्ट एंड टॉप मैनेजमेंट, 9 को डिजाइनर इनोवेटर मैनेजर, 8 को प्रोफेशनल इंजीनियर और मैनेज इंडिपेंडेंटली, 7th को इंजीनियर कह दिया, मैनेज अदर्स, 6 इज एडवांस टेक्नीशियन और सुपरवाइज इंडिपेंडेंटली कॉम्प्लेक्स जॉब्स, सॉरी 5 को टेक्नीशियन कह दिया, सुपरवाइज अदर अंडर द गाइडेंस ऑफ इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर, और 4 कह दिया क्राफ्टमैन वर्क इंडिपेंडेंटली। ये जो 5 नंबर का है ये है टेक्नीशियन, सुपरवाइज अदर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ इंजीनियर, और 6 है यह आदमी जो कि इंडिपेंडेंट काम कर रहा है एज ए टेक्नीशियन। इसका मतलब हुआ कि एक जो एंट्री लेवल पे टेक्नीशियन इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहा है वो 5 लेवल का है, और जो कुछ साल काम करके इंडिपेंडेंट काम कर रहा है वो 6 नंबर का है। अब जो आप करिकुलम आप डिप्लोमा प्रोग्राम में बना रहे हैं उसमें आप ज्यादातर जो है 5 नंबर के जो NSQF लेवल 5 है उसके की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आप जो है करिकुलम को बना रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई ऐसा है कि ये जो डिप्लोमा प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, ये किस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, तो सिविल वाला कहेगा कि साहब हमारे सिविल इंजीनियरिंग में 15 फील्ड हैं, मैकेनिकल वाला कहेगा 20 फील्ड हैं, इलेक्ट्रिकल वाला कहेगा 30 फील्ड हैं, सब अलग अलग हैं, और इन 30 के लिए जो बच्चा चाहिए उसको मैं तैयार कर रहा हूं। और मेरा जो डिप्लोमा है वो एक जनरलाइज्ड डिप्लोमा है। जनरलाइज डिप्लोमा का मतलब ये है कि बच्चा जो आपकी ट्रेनिंग लेके एजुकेशन लेके जाएगा वो कुछ देर तक काम करके जिस फील्ड में उसको जॉब मिलेगी वहां जाके वो काम कर लेगा और सीख लेगा। अब ये जो NSQF की बात कर रहे हैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जनरलाइज डिप्लोमा तो रहे, हम इसको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जैसा कल बाद में मैंने बताया कि भाई सिविल इंजीनियरिंग वाले देख लें कि कौन से आपके 15 फील्ड हैं, इलेक्ट्रिकल वाले देख लें 15 फील्ड हैं, मैकेनिकल वाले देख लें 20 फील्ड हैं, उनको क्लब कर दें कि कौन कौन से फील्ड जो हैं इकट्ठे हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल वाला PWD में काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वाला CPWD में काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वाला डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहा है सर्विसेज पे, उनके काम बिल्कुल सिमिलर हैं, तो उनको हम मानेंगे कि एक तरह की जॉब कर रहे हैं हमारे टेक्नीशियन। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 20 फील्ड हैं जिनमें की स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन हैं और जिनके की क्लब कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक हर एक ब्रांच में जो है हम 5-6 इस तरह के स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं जिनमें कि हम कह दें कि इस तरह के टेक्नीशियन या डिप्लोमा होल्डर सबको चाहिए। और NSQF ये कह रही है कि भाई हर एक एरिया, ये जो 5 एरिया हैं हर एक के, उनको एनालाइज करो और उनमें देखो कि ये 10 तरह के लोग लग रहे हैं क्या, कितने लोग लग रहे हैं ये रिकॉग्नाइज करो। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? रिकॉग्नाइज करने का तरीका उन्होंने बता दिया, कल थोड़ा सा बात किया था कि भाई
जो NSQF का दिया हुआ है उसमें हर एक लेवल का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जैसे लेवल 1 का आदमी है, वो क्या करता है, उसको क्या ज्ञान होना चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, उसमें कोर स्किल्स क्या होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी क्या होनी चाहिए। जब अगर 5 नंबर का आप देखेंगे तो उसमें भी उसने लिखा है कि टेक्नीशियन कहां काम करना चाहिए, क्या रोल है उसका, फिर उसमें क्या ज्ञान होना चाहिए, किस तरह का ज्ञान होना चाहिए, किस तरह की स्किल होनी चाहिए, किस तरह की कोर स्किल चाहिए और किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी होगी। तो NSQF कह रहा है कि भाई सारी जो आपकी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और भी जो भी फील्ड हैं, रिटेल है, सिक्योरिटी है, सब लोग आप ये जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आपको दे रखा है, जो उसके जो हमने हर एक लेवल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन को ख्याल में रख के आइडेंटिफाई करो कि कौन से लोग आपके इस डोमेन, इस स्पेशलाइजेशन में चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हर एक स्पेशलाइजेशन में सभी 10 लोग चाहिए हो सकता है बीच में कुछ लोग ना हो सकता है इंडस्ट्री कोई ऐसी हो जिसमें कि केवल 6 लेवल तक ये आदमी चाहिए, आगे के लेवल नहीं चाहिए। तो इसका निर्णय आपके जो बोर्ड हैं या करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर हैं या तुम्हारे पॉलिटेक्निक्स हैं, उनको निर्णय लेना है कि हमारी जो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है, जिसके जो स्पेशलाइजेशन है, किस तरह के ब्रॉड स्पेशलाइजेशन है और हर एक ब्रॉड स्पेशलाइजेशन में किस लेवल के लोग लग रहे हैं। अगर ये समझ में आ जाता है तब काम बहुत आसान है, क्योंकि जब आपने लेवल आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको मालूम हो गया कि मैन पावर जो है आपके उस स्पेशलाइजेशन में क्या चाहिए। अभी सवाल पूछते हैं कि जो हम अपना डिप्लोमा का करिकुलम बना रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक्स में लग रहा है, उसका बेसिस क्या है। बेसिस ये होता है कि हम लोग स्टडी करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, उस जॉब में लड़का क्या क्या काम करता है, उसको कौन कौन सी नॉलेज और स्किल्स चाहिए, सारी ब्रांचेस का उस नॉलेज और स्किल्स को प्राप्त करने के लिए बेसिक और क्या क्या चीजें चाहिए, उससे हम निर्णय लेते हैं कि ये नॉलेज और ये स्किल जो हैं बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है, ये और कम जरूरी है, और ये अगर समय मिले तो तब भी जरूरी है। तो इन तीनों निर्णय से हम निकाल लेते हैं कि भाई ये जो डिप्लोमा प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, इसमें टोटल नॉलेज क्या चाहिए, टोटल स्किल्स क्या चाहिए, टोटल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स क्या चाहिए बच्चे में, और इनको सीखने के लिए प्री रिक्विजिट क्या चाहिए। ये जो टोटल नॉलेज, टोटल स्किल्स, टोटल एटीट्यूड और बाकी की जो प्री रिक्विजिट वगैरह है, उनको हम ध्यान रख के हम जो है जो तुम्हारे डिप्लोमा प्रोग्राम है उसके करिकुलम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। और कल पाबला साहब ने कहा होगा कि उसको हम प्रोग्राम आउटकम कहते हैं, और A to K कहा होगा कि A to K जो प्रोग्राम आउटकम्स हैं वो आपको करिकुलम ऑब्जेक्टिव भी हैं, और वो कहां से ड्राइव किया गया है, वो ड्राइव किया गया है जो टेक्नीशियंस जो हमें चाहिए मार्केट में, और उनके जो क्या नॉलेज स्किल्स हैं, उनकी क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, और उसकी क्या प्रीरिक्विजिट है, और उसको ध्यान, और कितना समय है, इसको हम ध्यान रख के हमने ऑब्जेक्टिव लिखे। तो जब हम अपने डिप्लोमा प्रोग्राम जो डिजाइन करते हैं, सिस्टमेटिकली करते हैं, उनको हम जो है सारी जो जॉब्स हैं उनके टेक्नीशियंस को ध्यान में रख के करके जनरलाइज डिप्लोमा बनाते हैं। उसी प्रकार से ये जो तुम्हारे स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियंस हैं, हर एक ब्रांच के 4-4, 5-5, हर एक एरिया के आपको करिकुलम बनाने की जरूरत है। जब आपने सिविल इंजीनियरिंग के 5 एरियाज के टेक्नीशियन आइडेंटिफाई कर लिए और ये सारी हायरार्की आपने डिसाइड कर ली कि किस किस लेवल पे लगते हैं,
जैसे सिविल इंजीनियरिंग का ले लियो, मैं इलेक्ट्रिकल हूं, लेकिन सिविल का इलेक्ट्रिकल का ले लीजिए, पावर के एक अलग हो गए, सर्विसेज के अलग हो गए, इंस्ट्रूमेंटेशन का अलग हो गया, कंट्रोल का अलग हो गया। ये 5 या 6 एरियाज जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, इनके हमें जो है एरिया को अलग निकाल के इनमें देख लेना है कि किस लेवल के हमारे मैन पावर चाहिए 1 से 10 तक, और 5 लेवल का जो और 6 लेवल का जो टेक्नीशियन है उसकी क्या उसका प्रोफाइल है, उसको क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए, उसके लिए क्या नॉलेज चाहिए, को क्या स्किल चाहिए, क्या उसको जो है कोर स्किल चाहिए, इसके बारे में हम पता करा लें। तो एक बार उसको पता लग गया तो जिस प्रकार से हम करिकुलम दूसरे डिप्लोमा का डिजाइन करते हैं, इसी के प्रकार इसका भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, each level of NSQF 5 descriptor for a particular position in specific industry give idea of outcome or competencies to be demonstrated by manpower. Competencies focuses on what is expected of an employee in the workplace or ability to do job well. कि भाई आपने कॉम्पिटेंसी का निर्णय ले लेना है। ये कल मैंने बताया था आपको डायग्राम से, जो बीच वाला डायग्राम है उसमें जो है आपके इंजीनियरिंग टेक्नीशियन और इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन थे। इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन ये क्राफ्ट्समैन के पास थे और दूसरे जो थे इंजीनियर के पास थे, और ये सारा जो गैप था, ये बीच का गैप जो है, ये टेक्नीशियन मैन पावर का है। इसका मतलब हुआ, जो मैं कह रहा हूं कि 10 इंडस्ट्रीज हैं, 15 इलेक्ट्रिकल में हैं, उनमें जो आपके टेक्नीशियन चाहिए वो अलग अलग टेक्नीशियन टाइप के लोग चाहिए होंगे। कोई आपको टेस्टिंग के लिए चाहिए, कोई ऑपरेशन के लिए चाहिए, कोई कंट्रोल के लिए चाहिए, कोई इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए, कोई डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ये सारे टेक्नीशियन यहाँ इनके बीच में हैं, और हर एक के लिए जो नॉलेज और प्रैक्टिस रिक्वायर्ड अलग है। इसका मतलब है हर एक की कॉम्पिटेंसीज जो रिक्वायर्ड होंगी वो अलग होंगी। इसका मतलब ये है कि जो भी अलग ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग लें, उसमें जो टेक्नीशियन आप आइडेंटिफाई करें वो उसके फंक्शन के हिसाब से आइडेंटिफाई करें, क्योंकि उसमें नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायरमेंट अलग होगी और कॉम्पिटेंसी भी अलग होगी। कल हमने ये भी बात की कि भाई ये जो डिप्लोमा लेवल है, 5 लेवल है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन का, 6 नंबर प्रोफेशनल डिप्लोमा है, 7 नंबर डिग्री है, 8 नंबर डिग्री स्पेशल है, 9 नंबर मास्टर्स है और 10 नंबर डॉक्टरेट है। कल सैनी साहब ने भी और मैंने भी बात किया कि ये जो L1, L2 मतलब लेवल 1, 2, 3, 4, इनको हर एक को थाउजेंड्स मार्क्स का हमने कहा था, और ये 1000 जो मार्क्स हैं इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि डिप्लोमा कोई नेशनल डिप्लोमा लेवल 5 का वो तब एक्वायर करेगा जबकि वो 60 क्रेडिट ले ले। डिप्लोमा 6 नंबर का वो एक्वायर कर लेगा जब 120 क्रेडिट ले ले। नेशनल लेवल डिप्लोमा 7 one will acquire when we will be having a credit of 180, and national degree when he will be acquiring 240 credits. National diploma level 5 he will acquire when he will have 40 credits for level 5, and then he can add 20 credit for 3rd or 4th. Similarly, national diploma level 6 he will, national skill diploma level 6 he will acquire when he will have about 40 to 60 credits of level 6, and then rest of the things will be of other level. Similarly, 240 credits will be there when he will have some credits of level 8, other credits of level 3, 4, 5. And
when he has to acquire any qualification, national diploma or degree, whatever it is there, he has to ensure that whatever prerequisite of the previous qualification is there, that should be satisfied, that he should possess certain skills and knowledge. Number 1 will be national certificate level 1, national certificate number 2, national skill qualification certificate 3, certificate 4. NSQF level 2 and 3 are about, this is the requirement which can be there. Now, what is the meaning of 1 credit? 1 credit is equivalent to 20 hours instruction. This can be decided by the state in view of how many hours they are getting for instruction. But whatever is there, I have calculated with about 20 hours instruction per credit which is there, and maybe then you can have the same credit which you use in multi-point entry credit system, that 1 hour lecture will be 1 credit, 2 hours practicals, 2 hours tutorial will be 1 credit. So that can be used as a criteria for determining how much will be the credit requires for each qualifications which are there. And this, once they get that credit by showing their performance on the competencies which are required to be demonstrated in this, he will be awarded national certificate level, national skill qualification certificate 1, certificate 2, certificate 3 and so on. Although I have already told you, but again I want to repeat, NSQF description has, in NSQ descriptors of the levels include process, professional knowledge, professional skills, core skills and responsibility. NQF or national skill qualification levels can be defined by these 5 things. Process only tells कि भी ये टेक्नीशियन कहाँ काम करता है, किस इंडस्ट्री में करता है, क्या फंक्शन करता है, किस इसका लेवल क्या है, किसको ये रिस्पॉन्स करता है, आगे आने वाले समय में ये क्या पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा. प्रोफेशनल नॉलेज उस लेवल का मतलब है कि इस काम को करने में ये जो पोजीशन है इसको क्या क्या नॉलेज चाहिए. प्रोफेशनल स्किल्स मीन्स कि ये काम करने में उसको क्या क्या स्किल चाहिए. कोर स्किल्स मीन्स कम्युनिकेशन, कोर स्किल्स मीन टीम स्पिरिट, कोर स्किल्स मीन्स अदर values, attitudes, continuing learning, etc. And responsibility means, is he independent in working or he has to report to somebody. As you have seen, number 6 level is a technician who is working independently. Number 5 technician is that who is working under the supervision of engineer. The level number 1 certificate person who is a skilled or unskilled worker, he is fully responsible or fully guided by somebody. The same thing which National Skill Qualification Framework has used 5 points for description of the levels or identification of the level, same thing is used in a different form by the NBA. In NBA, you must have found that there are 2 terms which are being used, and Mr. Pabla must have told you that in the accreditation of the program, we start from vision and mission of the institution, then we go for vision and mission of the program. Vision and mission of the program is followed by education program, education objectives. That is followed by program outcome, and program outcome are followed by the course outcome, and is also includes the performance indicators or the criteria for evaluation. As a technical teacher, you are required to be aware of all these terms. In the NBA accreditation, the program education objective is defined by certain things.
What are those things? First is, what is the first one? Preparation. Education objective is first is preparation, then is core, then is breadth, then is professionalism, and learning to learn. This is there. So same way, learning to learn, this program education objective is similar to the goal of education, which I stated on the first day. Professional education, professional development for making present and future needs, that is covered by the breadth and professionalism. Then is basic. I have said that you develop professional for meeting present and future needs. Second, I said personal and social needs. Personal and social need is taken care by learning to learn and professionalism. Then you have social needs and personal need, learning to learn, then continuing learning is taken care by learning to learn. So what I want to say is, whatever NBA is propagating is also being propagated in the same fashion by NSQF. Then Pablo has also talked about program outcome. जब हमने करिकुलम बना रहे हैं, आपका करिकुलम है, उसमें सबसे पहले करिकुलम ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं. वो करिकुलम ऑब्जेक्टिव और प्रोग्राम आउटकम क्या है? वो यही आइडिया देता है कि बच्चा जब 3 साल के बाद निकलेगा तो उसमें वो इन एबिलिटीज को दिखा सके. और एनबीए में उसका नाम कैसे दे दिया है? A to K. मैं अभी थोड़ा आगे बताऊंगा कि A to K और केवल वही चीजें हैं जो कि आपने ऑलरेडी जानते हैं और पढ़ी हुई हैं. A to K आपके इंजीनियरिंग साइंस प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स भी है, इंजीनियरिंग साइंसेस भी है, बेसिक साइंसेस भी है, ह्यूमैनिटीज मैनेजमेंट भी है और बाकी जो चीजें हैं वो भी हैं. इसमें A to K में आप देखेंगे और A to I और A to G are you can say hard skills. H is professionalism. A program outcome A to K are hard skills. G and I are professionalism. H is soft skill and J is relating to learning to learn. मतलब है कि A to K जो है वो आपके जो है हार्ड स्किल्स हैं, प्रोफेशनल स्किल्स, इंजीनियरिंग साइंसेस, बेसिक साइंसेस, ये तीनों को कवर करता है. H, I and H are professionalism. These are also part of humanities and management and soft skill, and J is relating to learning to learn. So इसका मतलब क्या है कि एनबीए भी उसी चीज को बात कर रहा है जो कि हम ऑलरेडी अपने करिकुलम में कर रहे हैं. कोई नई चीज नहीं है. केवल अंतर यह है कि अब हम ये कह रहे हैं इंडस्ट्री की वजह से, क्योंकि एनएसक्यूएफ आया है, स्किल इंडिया कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पॉलिटेक्निक में जो आपका डिप्लोमा प्रोग्राम रन कर रहा है उसको तो रन करो, साथ साथ अगर पॉसिबल है तो ऐसे करिकुलम डिजाइन करो जो कि आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो और आपकी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें. इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा रन करिए, लेकिन साथ साथ में अगर आपके जोधपुर में कुछ इलेक्ट्रिकल स्पेशलाइजेशन की टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, आप सब महसूस करते हैं कि ये हमें नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये उस फील्ड को स्टडी करिए, 10 लेवल को आइडेंटिफाई करिए और उनके डिटेल्स बना लीजिए कि क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए. लेवल डिस्क्रिप्टर के हिसाब से कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करके उस कॉम्पिटेंसीज को जो देखिए कि उनका जो कोर्स है उसमें ये जो हमारे A to K का है, ये इसके सारे एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं. तो हो सकता है कि आप इससे एबिलिटी जो हैं 50 एबिलिटीज निकाल लें.
और उन 50 एबिलिटीज के यूनिट बना के आप संस्था में कोर्स को रन करें और देखें कि बच्चे उस कॉम्पिटेंसी का जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई करें, और अगर वो करें तो उनको सर्टिफिकेट दे दें और वो इंडस्ट्रीज में लग जाए। जैसा कि बाहर के देशों में है, आप जानते हैं कि हमारे बच्चे जब जाते हैं कनाडा, यूएस, सब जगह, तो वहां उनको डिप्लोमा लिया हुआ हो तब भी पूछते हैं आपको क्या आता है, आप क्या कर सकते हैं, और वो उनको टेस्ट देते हैं। टेस्ट से देखते हैं कि वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं एंड दे आर ऑथराइज्ड टू वर्क। तो ये एक ये है कि जनरलाइज डिप्लोमा तो बना रहे हैं जो कि जा ही रहा है, इसके साथ साथ हम और भी कुछ ऐसा डिप्लोमा बनाएं और जिसमें कि हम स्पेसिफिक नीड को पूरा कर सकें। अगर मान लिया एक बार आप वो डिप्लोमा बनाते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपका एग्जिस्टिंग डिप्लोमा है और इस डिप्लोमा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 30-40% का फर्क है, क्योंकि जो चीजें हम 50% स्किल में करा रहे हैं उसको हम कॉम्पिटेंसी बेस ही कर रहे हैं और उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए, उनको लिंक अप अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो 50% जो आप स्किल बच्चों को रेगुलर डिप्लोमा में कर रहे हैं उसी में इन बच्चों को भी लगा दें और जो कुछ और चीजें आपने करानी है उनको सेपरेट करा दें। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एग्जिस्टिंग डिप्लोमा प्रोग्राम है वो ऑलरेडी चल रहे हैं, उसके साथ ही आपने कुछ बास्केट ऑफ, मैं बास्केट कहता हूं, यू हैव ए बास्केट ऑफ theoretical subject, basket of competency subjects or skill subjects which you design and have it and offer in your polytechnic. Anybody wants to have a you can say diploma in working in distribution and service sector, he can get that theoretical and practical inputs and he can get it certified by the agency, and once he get that certificate his qualification will be accepted all over the globe. Last I have written, I have already talked to you, AICT Professional Basic Science, Engineering Science and Humanities and Management. These are the broad areas in which your diploma program is there, and same thing is for their undergraduates, same is for the graduates, and same is for postgraduate also. So therefore it is possible that you can analyze your curriculum and try to find out कि भी हर एक चीज जो हम पढ़ा रहे हैं उससे क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप हो रही है और उस कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई कर लें और फिर अलग एक डिप्लोमा का सेलेक्ट करके आइडेंटिफाई करके करें, देखें कि इनमें और उनमें क्या अंतर है और किस प्रकार से हम एक और डिप्लोमा ऑफर कर सकते हैं in addition to that, in which we will have certain basket of basic sciences subject, we will have some basket of engineering sciences subject, some basket of professional subject, some aspect specialized subject and so on. जो मैं बात कर रहा था कि डिस्क्रिप्टर के हिसाब से जिसको कि हम आइडेंटिफाई करें इंडस्ट्री में कि किस लेवल का आदमी कौन है, तो ये जो मैंने बताया था हमारा डिप्लोमा कॉलेज जो है टेक्नीशियन और ट्रेनी और डिप्लोमा होल्डर, पहला है प्रोसेस, जॉब दैट रिक्वायर्स वेल डेवलप्ड स्किल्स विद क्लियर चॉइस ऑफ प्रोसीजर्स इन फैमिलियर कॉन्टेक्स्ट। अगर आप उस एरिया को जब एनालाइज कर रहे हैं कि ये जो जॉब है वो इस तरह की है, इसमें नॉलेज क्या चाहिए, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस एंड जनरल कॉन्सेप्ट इन फील्ड ऑफ वर्क और स्टडी, ये चाहिए हमें। सॉरी पिछला वही जरा, स्किल क्या चाहिए, a range of cognitive and practical skill required to accomplish tasks and solve problem by selecting and applying basic methods, tools, material and information. Core skills क्या चाहिए, desired mathematical skill, understanding of social, political and some skills of collecting and organization information and communication. Responsibility क्या है, for his own work and learning and some responsibility for others work and learning. ये अगर इस तरह का आप देखते हैं कोई आदमी काम कर रहा है तो आप कहेंगे मैंने आज आइडेंटिफाई कर लिया ये टेक्नीशियन है, ये लेवल 5 का है।
इंस्ट्रूमेंटेशन इंडस्ट्री में आपने देख लिया कि ये आदमी है, इसको मैंने अपना डिटेल में स्टडी करना है, और डिटेल में स्टडी करके इस तरह का मैंने इसका जो है कॉम्पिटेंसी जो है प्रोफाइल बनाना है कि ये क्या है, क्या कहाँ काम क्या करता है, कहाँ लगा हुआ है, किस लेवल पे है, किसको रिपोर्ट करता है, नॉलेज क्या है चाहिए इसको, स्किल्स क्या चाहिए, कोर स्किल्स क्या चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सबको डिटेल आउट जैसे कि आप डिप्लोमा प्रोग्राम में करते हैं, इस प्रोग्राम के लिए भी आपको करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम आउटकम डिटेल्स पावला साहब ने बताया, और मैंने भी बताया कि जब हम डिप्लोमा का एक्चुअल प्रोग्राम डिजाइन करते हैं उसमें भी हम करिकुलम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। करिकुलम ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जब बच्चे ने कोर्स कर लिया तो वो किस तरह की एबिलिटी शो करे। तो ये एक डिप्लोमा प्रोग्राम की या डिग्री प्रोग्राम के A to K जो है आउटकम लिखे गए हैं। तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपके जो एग्जिस्टिंग डिप्लोमा प्रोग्राम है उनके आउटकम डिटेल्स लिखें A to K। जो करिकुलम ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं उनको इस फॉर्म में करें। और जैसे मैंने कहा कि A to A B C D E F G तक जो है हमारे या जी तक आपके हार्ड स्किल्स हैं, फिर उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स हैं, और उसके बाद लर्निंग टू लर्न है। तो सबसे पहले आप अपने जो डिप्लोमा प्रोग्राम है उनके A to K लिखिए, और वो जो टेक्नीशियन आपने आइडेंटिफाई किया है जो कि स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन है, जिसके लिए कि आप कोर्स डिजाइन कर रहे हैं या इसको मॉडिफाई कर रहे हैं जिससे कि उस कोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा हो जाए, तो उसके भी प्रोग्राम आउटकम लिखें। जब दोनों के आप प्रोग्राम आउटकम लिख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इतने प्रोग्राम आउटकम तो मेरे ऑलरेडी फुलफिल हो रहे हैं, इस एक्स्ट्रा प्रोग्राम आउटकम के लिए मुझे जो है ऑप्शंस देनी पड़ेगी बच्चों को कि भाई ये भी मैं ऑफर कर रहा हूं, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन का सर्टिफिकेशन करना चाहो तो साथ साथ आप इसको कर सकते हो। ये क्या है, फर्स्ट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएट विल डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू अप्लाई मैथमेटिक्स एंड साइंस in engineering subjects. Graduate will demonstrate an ability to identify, formulate and solve engineering problems. Graduate will demonstrate an ability to support, not a diploma holder will not design, will support the design and conduct experiment, analyze and interpret data. Graduate will demonstrate the ability to design a system, component and process as per needs and specification. Graduate will develop ability to visualize and work on laboratory and multidisciplinary track. Graduate will demonstrate skills to use modern engineering tools, software, equipment to analyze the problems. Graduate will demonstrate ethic, professional and ethic responsibility. Graduate will able to communicate effectively, verbal and written form. Graduate will show the understanding of impact of engineering solutions of society and also will aware the contemporary issues. Graduate will develop confidence for self-education and ability for lifelong learning. Graduate who can participate and succeed in competitive examination. So what I want to tell to you is that it is broadly giving you an idea. What is required is you have to detail out for the existing program, and then you have also detail out for the other program which you are designing. And it may go to the 3-4 pages, because in each you will have to specify the things what is required to be there for demonstrating the capabilities. This I have already told you that the structure of the program, any program of diploma or degree has got these 4 areas in which the things are there. So in the program which you are designing, you will also have the same thing. Only thing is that name will be different, the competencies will be different. Now question comes is how to go about it. What you have to do is you have to find out the competencies
first you have to find out what is the job, and what is the level which is required to be there. And once you have identified the job and identify the level of the technician and the higher up and the lower up, the next thing is to study in details about the job. For example, I consider that maybe at the level 2 मैंने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये जो वल्कनाइजर हैं या पंचर लगाने वाले हैं, पंचर लगाने वालों की भी 4 कैटेगरीज हैं। लेवल 1 का है, लेवल 2 का है, लेवल 3 का है, लेवल 4 का है। साइकिल में पंचर लगाने वाला, मान लिया मैंने लेवल नंबर 2 है, अगर मैंने उसके जॉब का एनालिसिस करना है और कॉम्पिटेंसी निकालनी है और प्रोग्राम को डिजाइन करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसको हम एक अप्रोच कहते हैं, डेकम अप्रोच। लेकिन मैं डिफरेंट ये कहूंगा कि आप एक सर्कल सा बना लें। सर्कल में अंदर आपको गया पंचर लगाना, पंचर में क्या क्या लगाने के लिए वो क्या क्या करता है वो सर्कल के पार्ट्स में लिख दें। So that will give you the small jobs which is the part of the vulcanizer और साइकिल में पंचर लगाने का। उसके अगले वाले सर्कल में लिख दें कि वो जो छोटी छोटी जॉब है उनमें क्या क्या टास्क करता है। उससे अगले सर्कल में लिख दें कि इन टास्क को करने के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसीज इसको चाहिए। तो इस प्रकार से आप ये जो पंचर लगाने वाला है या वल्कनाइजर है उसका आप डेकम चार्ट बना लेंगे, जो कि आपको आइडिया दे देगा कि एक पंचर लगाने के लिए या जो पंचर लगाने वाला है लेवल 2 या 3 का आदमी है, उसमें जो है किस तरह की जॉब है, क्या क्या उस जॉब में टास्क करने पड़ते हैं, उस टास्क में करने के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए। और कॉम्पिटेंसी अगर आपने मालूम पड़ गई तो अब उनके आप यूनिट बना सकते हैं, और कुछ यूनिट नॉलेज के हो सकते हैं, कुछ यूनिट स्किल्स के हो सकते हैं, कुछ यूनिट एटीट्यूड्स के हो सकते हैं, और उनके बेसिस पे आप जो है हर एक वल्कनाइजर या पंचर लगाने वाले का जो एक आपने कोर्स डिजाइन किया है उसमें 10 यूनिट्स बना लेंगे, और उस 10 यूनिट्स आप लोगों को दे सकेंगे कि आप इस 10 यूनिट के कोर्स, इसको 10 यूनिट्स को करिए, इनके टेस्ट होंगे, आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, और अगर परफॉर्मेंस दिखा देंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिस NSQF लेवल नंबर 2 ऑफ ऑक्यूपेशन वल्कनाइजर। Same way when you are doing for level 5, level 4, 3, 2, etc., you have to study the job which the technician is doing under the 5 level of descriptors which I have already mentioned. Detail out those things. After identifying what are the tasks, then under each you find out the competencies which are required. Then from those competencies try to find out the units, competency units, and if you are able to find out the competency unit, then you can plan how that competency unit can be detailed out further, and how instruction can be there, how evaluation can there, so that the desired competencies can be found out. National, as I mentioned yesterday, National Skill Qualification Framework is being worked by NSDC, National Skill Development Corporation. They are through sector councils, they are developing national occupation standards. So whenever you are going for aligning any program, go on the website of NSDC and try to find out, is there any occupational standard for the program which you are designing, aligning. If it is not there, then you go on international website, international occupation standards, mark civil engineer, international occupation standard, mark electrical engineer.
International Occupation Standard mark mechanical engineer. You also find out what is the criteria of certification of a civil engineer, mechanical engineer and automobile engineer in a foreign country. See both all these things. Go on finding out what are the competencies identified, how the program they conduct for this. You will be able to identify the competencies as well as the units, competency units, which you have to give to the students for getting the training and getting the certification. Recently, I revised a curriculum of the electrician for a Nigerian government, and in that I was having the requirement of electrician which is there in ITI course in India. I went on the website, tried to find out how electricians are being certified in foreign countries, and from there I could find out what are the competencies required, and I took care of those competencies in the revision of the program, so that the electricians who are passing from the Nigerian polytechnics or ITIs are able to get certification abroad. So the crux of the thing is, your diploma holders are good enough. They are for the generalized diploma holder, which take care of the requirement of all specializations which are there in each branch of engineering. They are not specific to a particular area of work in which our boys can get employment. It is, we have designed the curriculum very nicely, and we are having a philosophy that these generalized diploma holders will go to the industry, they will get certain specialized training wherever they get employment, and after some time they will acquire some more competency so that they become independent technicians. And if you test them after 2 years, they can get an award of NSQF diploma level 6. Industry is asking us, we are interested in having NSQF 6. We don't want NSQF 5 because they don't want to spend money for training the boys. They want specialized person, and for that it is essential that our polytechnics should come forward and tell them, okay, you give your requirement to us, which area is required in Jodhpur or near area or in Rajasthan, and these are the 3 type of specialization we will offer in one polytechnic is Bikaner, one polytechnic in Kota, and one polytechnic here. You make a study of the various manpower required from 1 to level in those industries, in consultation with the industries, make their profiles with the descriptors and identify what are the competencies required for each of the specialization. Try to, when you are working on level number 5, try to identify what are the competencies required for level 5, what are the program outcomes which are there for level 5, and once you are able to identify in further detail about the competencies required, you will be able to have the units, 50 units for one program, and then try to see how those 50 units can be covered under the existing polytechnics, what other extra can be required for that. Take the help of the industry in giving the practical experience. Theoretical things you can give at your own level, and if practical certification is done by you, theoretical certification is done by you, the diploma can be awarded by the board. So any program which you run under NSQF level 5, go for an industry partner. Ask the instrumentation and automation. I took a training in Kota, instrumentation Kota, long time back, which is nowhere now. Get the instrument, if instrumentation requirement is there, get the instrumentation industry in Rajasthan, ask them, come together, we will prepare people for your requirement. You join with us in identifying the level of the technician and descriptor in terms of competency for that.
Then we will try to decide what are the units required. These units are already we covering, these units which are required to be there, and we will have a joint certification and ensure our boys and girls that you will employ them. So joining together with industry not only designing the program, helping you to conduct the practical experience, you giving the theoretical inputs. If you work together, it will be possible to have the specialized people. And slowly, if you are able to identify partners of the industries in all branches of engineering, it will be possible that you will be creating the manpower which is readily be acceptable by the industry, because they have not to spend money, for providing training to them specific to the requirement. Our students will also be beneficial because they will be very clear that they have to make career in this industry rather than thinking about कि भाई जहां मिलेगा देख कर लेंगे. This is DECRAM approach. I don't want to go in detail about this because this you can see very much. You have told me to finish 3 o'clock. If you have got any question, you can ask me. Have you understood? Yes, we have followed your point. Ajay? We have followed your point, sir. Will it be possible for you to have a sort of, think of having an, aligned curriculum of specialized diploma programs under NSQF? Sir, you mean in future? Yeah, in future. Not only the diploma in computer science is required, the diploma in network design, network management, network security, these type of diploma holders are required as per industry demand. This is what I'm saying now. I have said the same thing, that you have identified these areas and analyze the 1 to 10 level in the industry with the help of the industry, then see that 5 level or 6 level or 8 level, what is the job description of all these, what are the competencies required. Once you identify the competencies, then try to identify the units which can be given, and then try to see that how much theoretical knowledge units are covered by the diploma program in computer which is being run in the Polytechnic. What are the other skill which also covered, and what are the things which are required to be covered. And for that you can give to the industry, you help us in giving the experience and training to the students in the network construction, and give a certificate that these boys have acquired the skills. So they give you the certificate, you give to the theoretical and the core areas. Board of the State Board of Technical Education consider both the certification of the students, and based on that give a diploma in network management or whatever it is. At present we are preparing level 5 type of diploma holders. Yeah. And to make them up to level 6, yeah, we require a lot of labs. That type of labs is open for 36 hours in a week. So do government have a plan to spend this much of budget to develop this type of labs? I agree with you. Nowadays funding is not that easy as it used to be earlier because of the a lot of customers. So nobody will give you the money to have labs up to the industrial requirement, because there the changes. What is required is we have to have a tie up with the industry. Do the industry have a planning to spend the money on the institution, because they spend the money on the training? If they plan to spend the money on the institution to develop this type of lab as per their industry requirement? I agree with you. If the industry is very, they are quite empathic and has got consideration about this, and they can join with you in setting up network labs in your Polytechnic to their advantage and to your advantage, it is a welcome step. But
if they are not able to spend the money, then the alternative is that board should have a memorandum of understanding with the specialized industries in computer networking, and try to see that how can jointly they run a cooperative program. In future, Another term I have given is cooperative program. sir, my last question. Yeah. So the NHRD has a planning to develop a degree type of diploma holders. Yeah. You know, you must have heard, maybe Rajasthan has not taken, but what is there is other institutions have taken community colleges. There are 200 community colleges which have been started by AICT, in which what they have said is that polytechnics will be running with the industry, will running the programs by which bachelors in vocational education will be awarded. Do the MHRD has this type of planning? Yeah, AICT has given funding to 200 polytechnics in the whole of the country. I was a member of that committee which reviewed the proposals and the working of the 200 community colleges which are being run in the country. You go on site of community college propagated by AICT, you will find what type of specialized program has been taken by the states from Karnataka, Maharashtra, and Punjab, Himachal also. Uttarakhand has done also. What I feel is Rajasthan has, I don't know whether they have done it or not, but other states have done. I have heard that Gujarat has started this. Gujarat, Maharashtra, Punjab also. Punjab is very near. You can see at Meherchand Polytechnic, Jalandhar, and one more polytechnic they have started. Tamil Nadu has also started. Yeah, pardon? Tamil Nadu. Yeah, Tamil Nadu also. So what I'm saying is, as you have question, I have answered your question, that institutions have started, taking money for running the, this bachelor's in vocational education in network, metallurgy, and specialized areas. In that, what they have done is they have taken an industry partner, and industry partner will give you students also. Industry partner will give you support also for training the persons and certifying the person as regard the skill part is concerned. As the theoretical part is concerned, that will be done by the polytechnics, maybe in the office hour or later on, or with the existing program which are there. It's a very good scheme, and one should take the advantage of that. Thank you, sir. Any other question? एक मिनट बात सुनो, जरा पावला साहब को फोन करो. Okay. नहीं, वहां से पूछ के लेकर. In the meantime, I'll discuss. We will just take a few minutes. Professor Pavla will be coming, and then we will be closing. Any other question, please? Question? Any question? ये सुन रहे हैं क्या? हाँ जी. Any question? Yeah. Any question you would like to ask? Is it possible? Now you have understood how, if you, Professor Sani also pointed out yesterday, that AICT has given level 1 is 200, 500, 200, 500, so on. Whatever is there. In our diploma program also, when we talk about level number 5, level number 5, when we see our existing diploma, we have 500 ratio of theory and practice is 50-50, almost. So if it changes slightly, it doesn't matter. So it means the program which we are already running, we are running in such a way that the ratio is there. But only thing is, what is required is we have to go for a specialized program. आनंद साहब, हाँ जी बोलिए. दरिया सिंह बोल रहा हूँ मैं जोधपुर से. दरिया सिंह सर, नमस्कार सर. नमस्कार, आपको नया साल मुबारक हो. बताइए सर. आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं राजस्थान की ओर से. हाँ जी बताइए सर. आपने काफी अच्छी जानकारी दी है. प्रश्न नहीं है मेरा. मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान भी कोशिश कर रहा है NSQF और NBA के लिए. जी सर. और हमारे इंस्टीट्यूशंस जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं. और ये जो 2 दिन का प्रोग्राम था, ये इनकी आवश्यकता थी. कुछ डाउट्स थे और मैं समझता हूँ कि काफी डाउट्स आपने क्लियर कर दिए हैं.
जी और जरूरत होगी तो हम आपके साथ में मिलके जो है इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। आपको NITT के डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी मिस्टर पावला 2-4 मिनट में आएंगे, बिकॉज आई टॉक टू हिम, although I was prepared for talking to you and working with you for 3 hours, but he said to me कि आनंद साहब 1 घंटे में ही थोड़ा एक्सप्लेन करें तो अच्छा रहेगा. So he will be coming just in few minutes. You kindly be patient with me, so that let him come, and he is coming. In the meantime, if you have got some questions, you can ask. Hardly he will take 2-3 minutes in coming. अब आप इसके जो आपकी ब्रांचेस हैं उनमें आप थोड़ा प्रयत्न कीजिए कि देखें कि ये दरिया सिंह जी, अगर आप मुझे भी थोड़ा अवसर दें, अगर ये देखें कि राजस्थान में कौन से जो एरियाज हैं जिनमें कि हमारी इंडस्ट्री थोड़ा सा, चाहे वो डायरी की हो चाहे कोई भी हो, जिनमें कि आप समझते हैं कि पॉलिटेक्निक में कोई भी एरिया, वो 25-30 एरिया ये जो लिए हैं उनमें से कुछ एरिया आइडेंटिफाई करिए. उन एरिया में आइडेंटिफाई हम करके कर देखते हैं कि भाई जनरलाइज डिप्लोमा तो रन करेंगे, लेकिन जो उनको स्पेशलाइज्ड उनको लोगों की जरूरत है, उसके लिए हम किस तरीके से अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उनको रिवाइज करें, जिससे कि वो NSQF अलाइन भी हो जाएं और हमारे बच्चे भी जो हैं उनको पहले ही वो ऑफर दे दें कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग करोगे, हमारे यहाँ एजुकेशन लोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल करेंगे हम. हमारे जो बड़े पॉलिटेक्निक्स हैं जैसे जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जी सर, उनसे हम जो है प्रस्ताव लेंगे. दूसरे कॉलेज भी आगे आना चाहते हैं तो हम उनसे प्रस्ताव तो आप इसको NSQF को कोई हवा नहीं माने. मैं जब भी इनकी बारे में बात करता हूं, हम लोग, आप लोग पुराने लोग हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, हम तो 40 साल से पहले ही ये करिकुलम ऑब्जेक्टिव लिखते रहे हैं. करिकुलम ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, ये वही जो है प्रोग्राम आउटकम है. ये प्रोग्राम और कुछ नहीं है, ये एबिलिटी जो है, कॉम्पिटेंसीज ही है और कुछ नहीं है. बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक तो है आपने कि हम इसको कोई बड़ी चीज जो बाहर वालों ने हमने कह दिया है उसको कोई बड़ा चीज नहीं समझे, थोड़ा सा इसको अपने ढांचे में डालने की कोशिश करें. अगर हम कर लेंगे तो जो है हमारे बच्चे और ज्यादा एक्सेप्ट हो जाएंगे. थैंक यू. कोई फ्रेश जो बच्चे हैं, लेक्चरर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, नए हैं, वो अपने थोड़ा विचार बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए तालियां बजाता हूं कि आप लोग इसको ध्यान रखते हैं, करते हैं, कुछ करते हैं. हाँ, बताएं, कोई अपना नाम बताएं और कुछ बताएं. क्या कैसा लगा आपको, कैसा सुना आपने, क्या अंडरस्टैंड किया? कोई जो हमारे HODs हैं या कोई लेक्चरर हैं, कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं कि क्या मतलब है कि क्या बातचीत हमने की और क्या हमने निर्णय लिया, निष्कर्ष क्या निकला? आइए सब निष्कर्ष बताइए कि अब क्या हमने निकला है, या कोई भी बताएगा क्या निष्कर्ष निकला है. व्हाट इज द फाइनल डिसीजन ऑफ 2 days वर्कशॉप विच वी हैव डन? What will be the thing you will start and you will try to do at your own level? सर मेरा एक क्वेश्चन है. जी सर. ट्रेनिंग है वो 1 महीने की ट्रेनिंग है जी, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है सर, जी सर, आफ्टर ईयर वो 1 महीने की ट्रेनिंग है जी. क्यों ना ट्रेनिंग को 6 महीने की कर दी जाए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. जी जी. उसमें स्पेशलाइजेशन भी हो जाएगा कि कौन बच्चा कौन सी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करना चाहता है, और उसके अकॉर्डिंग 6 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद उसकी श्योरिटी भी हो जाएगी वो उस इंडस्ट्री में काम करने लायक है, जॉब करने लायक है. बहुत अच्छा, वेरी गुड सजेशन. ऑन जॉब ट्रेनिंग 1 सेमेस्टर की दी जाए. ओके, समझ गए. जैसे हमने बताया कि जब आप ये NSQF जो मैंने बताया कि ये स्पेशलाइज्ड लोग चाह रहे हैं, स्पेशलाइज्ड लोग के लिए मैंने कहा कि इंडस्ट्री के ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से MOU करें, MOU करके उनके साथ कोर्स को डिजाइन करें. उसमें ऑटोमेटिकली आपके जो है 6 महीने की ट्रेनिंग उसमें आ जाएगी, जो कि इंडस्ट्री को सर्टिफाई करनी पड़ेगी, तो नेचुरली उनको ले लेंगे. लेकिन आपका सुझाव बहुत अच्छा है. हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में पहले ऐसा ही था कि भाई ट्रेनिंग जो थी 1 सेमेस्टर की पूरे ट्रेनिंग थी. हाँ, और बताइए, कोई यंग जो हमारे फैकल्टी हैं उनके कुछ विचार सुनना चाहेंगे.
मैडम आप बताएंगे कुछ, क्या आप कौन से डिसिप्लिन के हैं? सीटी साले सर। है जी? चलो आप बताओ। sir, good afternoon. Myself Sanjay Mathur from Jaipur. सर मेरा एक क्वेरी था कि ज्यादातर हम जब इंडस्ट्रीज को बुलाते हैं या हम लोग भी यहाँ पर देखते हैं कि यूजुअली जो इंडस्ट्रीज का रिक्वायरमेंट वो मीट आउट हो नहीं पा रहा, क्योंकि हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है और जो इंडस्ट्रियल का रिक्वायरमेंट उसके बीच में काफी गैप है, तो ब्रिजिंग उसके बीच में रिक्वायर्ड है। तो क्या ये भी पॉसिबल है क्या कि हमारा जो स्टाफ है वो भी कुछ पीरियड के लिए इंडस्ट्री में या डिपार्टमेंट में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पीरियड के लिए उसको भी अलाउ किया जाए, ताकि वो भी वहाँ पे एक्सपीरियंस करके इस सिस्टम में वापस आए और उसके इनपुट को वो उसको इनकॉर्पोरेट कर पाए, कि सिर्फ इंडस्ट्रीज से हमेशा पूछ कर हम हमारे करिकुलम को या सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, ये प्रैक्टिकली लगता नहीं है ऐसा कि पॉसिबल है। अगर इसमें एक मेथड ये भी डाल दें कि हमारा स्टाफ भी अगर उधर जा पाए कुछ पीरियड के लिए, चाहे वो 6 महीने के लिए जाए, 1 साल के लिए जाए, 3 साल के लिए जाए और वापस आ पाए, तो इस मेथड से भी ये सिस्टम में जो ब्रिजिंग है पॉसिबल है। ऐसा मुझे कई टाइम्स ऐसा लगता है कि ये क्यों ना गवर्नमेंट या आपके सिस्टम से इस चीज को स्टार्ट किया जा सके। बहुत अच्छा माथुर साहब, बहुत अच्छा सजेशन है, आपके लिए शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमने ये जो NSQF की बात कर रहे हैं स्पेशलाइज प्रोग्राम का, उसमें जो तुम्हारे बच्चे इंडस्ट्री में काम करेंगे वहां पर उनका सुपरविजन जो होगा और जो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे वो टीचर और ये इंडस्ट्री वाले मिलके करेंगे। तो नेचुरली a teacher has to update himself कि what is happening in the industry and he has to give inputs to the students. So नॉर्मल पॉलिटेक्निक में तो ये करना चाहिए जो आपने कहा है। इसके साथ साथ अगर इस तरह के स्पेशलाइज कोर्स आप NSQF के अंडर करेंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि टीचर्स को भी प्रैक्टिकल जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में ज्ञान ज्यादा होगा और वो उसके स्किल्स को भी एक्वायर कर सकेंगे। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जब आप लोगों से बात की तो समय थोड़ा था, लेकिन फिर भी मैं कई बार समझता हूं कि पढ़ाना केवल अपनी ज्ञान को देना ही नहीं है। टीचिंग इज नॉट ओनली नॉलेज, imparting knowledge, it is not only imparting skills, it is much beyond all this. And if you have a God gift, you can do many things which you don't think before coming to the class. I had prepared for 3 hours. Professor Pavla told me you have to do in 1 hour, and I feel satisfied that in 1 hour I could compress everything and tell to you those things which is implemented in the states of Rajasthan under the NSQF and under the preview of NBA. Thank you very much. I'll request Professor Pavla to kindly take and talk to you. Thank you, Professor Vaikenan. I'm thankful to him for accepting my request to be a part of the program. The main motive behind this program was to cover 2 aspects. One is introduction to accreditation of diploma programs, how the process works, what are the criteria, and introduction to very hot topic on NSQF and how to align our program to NSQF, because by 2016 it is a compulsion that we have to align the programs to NSQF, all your diploma programs also. The shape of the program is going to change. Like in first year we keep teaching basic sciences, but the requirement under NSQF is that the persons can go out of the college after first year also. That means we need to make more technical contents in the first year itself. We have tried our best. In spite of the technological constraints, there has been many connections lost in between. Many times we were disconnected from us, and we keep speaking without realizing that they are not connected to us. But today, after few hitches, we have been good. The connection has been good, and interaction has also been very good.
from this program, because we have been conducting these ICT based programs since long now, I feel that this was a very interactive program. People have listened to us and they have interacted, given their ideas, because you are all senior people. As Professor Vaikanand said, it is not a one-way traffic, it has a two-way. We also learn from you many things. So before we close this program, anybody who wants to say anything? कुछ कोई और अपनी तरफ से कहना चाहते हैं? Anything you want to add on? नरेश सिंह जी, आप कहेंगे कुछ? आ जाओ सर आप। पावला साहब नमस्कार। ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। 2 दिन में आपने काफ़ी कुछ जानकारी दी है। आपको NITTTR को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हमारा ये जो इंटरेक्शन है वो आगे भी बना रहे। हमारी फैकल्टी जहाँ भी दिक्कत महसूस करेगी आपसे संपर्क करेगी, और NSQF और NBA के जो प्रोग्राम्स हैं वो आगे बढ़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दरिया सिंह जी। मैंने आपको आपका कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी है। आई होप एवरीबॉडी हैज इट। तो आपके लिए तो एक सरप्राइज था, आपके ब्रदर को हमने स्टूडियो में ले आए आज। हाँ, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारी तरफ से हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, पोस्ट की जो टीम थी, आप सबको आई विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पर्स न्यू ईयर 2016। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।